हम्म। स्ट्रीम लैब्स नहीं, स्ट्रीम एलिमेंट्स अलर्ट्स। अच्छा हाँ, ये तो सेटअप करना था। अच्छा, गेम कैप्चर ऑफ है। हेलो। ब्लैक स्क्रीन शुड एंड अबाउट नाउ। वाईटी पे भी स्ट्रीम स्टार्ट हो गई। हम्म। हो गई। नाइस। आज मैं एग्जैक्ट 5:30 या 5:20 के आसपास ऑनलाइन आ गया था टू स्टार्ट द स्ट्रीम अराउंड 5:30 अराउंड। 15-20 मिनट लेट हो गया। अब आज तो हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, हमें करना ही पड़ेगा। Without further ado. अर्ली, हाँ 5:30 अराउंड मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ हमेशा से ही, बट थोड़ा थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभार। 6:30 पूरा एक एक घंटा लेट हो जाता हूँ। बट आज तो हमें वारका की स्टोरी तो करनी है। ये क्या, अभी कैसे इवेंट आ गया? अब तो ये पैच तो ख़त्म होने वाला है। इवेंट दे दिए इन लोगों ने, बट इसके सारे लेवल्स तो आए नहीं होंगे ना अभी। अच्छा, नया वीक शुरू हो गया ना आज से। ओके। एक्सप्लोरेशन भी, एक्सप्लोरेशन के 300 प्रीमो है। ओके नाइस। आज इसको ख़त्म करेंगे वारका की स्टोरी को। टेस्ट रन एक बार फिर से खेलता हूँ। मैंने ये फ़ोन पे खेला था आई थिंक। वो लास्ट सेकेंड हाफ इज लेफ्ट। हाँ, मेरे को याद नहीं था, मतलब मेरे को याद नहीं था कि ये ऐसे बीच में भी दे देते हैं वो सब। Story has only just begun. Time for takeoff. Maria sweeping in. Thunder. Okay. New life. Leave it. Think you can get away? जितना लग रहा था ना कि भाई डुअल बिल्डिंग क्लेमोर आ रहा है, बहुत मज़ेदार होने वाला है, उस हिसाब से बहुत हाइप मरवा दी है इस बंदे ने। फर्स्ट डुअल क्लेमोर विल्डिंग आया था बंदा, और क्लेमोर अपने आप में ही लोग हैंडल नहीं कर पाते, वो तो वो पावरफुल लग रहा था, बट जिस वे में आया है ना भाई, बहुत वीक है।
लाइक करंट स्टेट में तो वीक है, हो सकता है कोई अगर सपोर्ट आ जाए इसका अच्छा सा तो मे बी थोड़ा बेटर हो जाए, बट ओवरऑल तो वो बात नहीं है इस बंदे में। कोई तो बजा दो। थोड़ी देर एक्सप्लोर करते हैं फिर मैं स्टोरी शुरू करूँगा। 15-20 मिनट्स एक्सप्लोरेशन, फिर शुरू करते हैं स्टोरी। रेजन कितना है? 109। अभी तो है ही नहीं भाई रेजन, है ही नहीं रेजन, क्योंकि कल जितना मैंने एक्सप्लोर किया ना उससे मेरा 1 मिलियन हो गया समाओ। मोरा एक्सप्लोरेशन से बहुत मोरा मिल गया। 1 मिलियन फिर से बन गया, जबकि शायद फ्लिंस की अल्ट मैंने क्राउन भी कर दी। दिखा ना कहाँ है? हाँ देखो, अल्ट क्राउन करने के 7 लाख डायरेक्टली लगा है यहाँ पे, तो उसके बाद भी 1 मिलियन 1.1 मिलियन है। तो एक्सप्लोरेशन कर रहा हूँ मैं तो अब थोड़ा सा, थोड़ी देर एक्सप्लोर करेंगे फिर बस स्टोरी, जो भी कहना चाहो। इससे रीसेट नहीं होना चाहिए ये, मेरे हिसाब से तो ये इसके पास रीसेट होना चाहिए ये। यहाँ पे मैं फ्लिंस वाली टीम करूँगा, मज़ा आएगा प्लंज मारने में। और ग्रुपर और एक हीलर ले लेंगे। वी डोंट नीड दैट मच डैमेज ऑन इन ओवरवर्ल्ड। I was grinding for Zibai and ended up almost maxing out Nordcry. हाँ वो तो जब कैरेक्टर लेना होता है तब तो कैसे रीजन होते हैं फटाफट फटाफट, तब तो होता ही है। नए कैरेक्टर के चक्कर में तो भाई सब लोग सब उड़ा देते हैं। थोड़ी सी बुक्स भी मिल जाएगी भाई। Be silent. Observe. Night falls. Close your eyes. To dust. Wind Strider. I'll settle this. Dissipate. As one with wind and cloud. Be silent. Observe. Night falls. Time to go. यहाँ की कोई क्वेस्ट है क्या? ये कैसे हटेगा यहाँ से, या ये कभी नहीं हटेगा? एबिसल जो भी है ये कोरोजन, आई थिंक इनका तो कुछ तो रिलेशन होगा। Into the wind. Stand with me. Fallen leaves. Adorn mine. Be silent. Observe. To dust. Close your eyes.
wind knows it. Surge. Lightning Shuriken. Beware the creatures of the night. Be silent. Close your eyes. Night falls. इससे ठीक नहीं हो रहा. Link क्या है? Well, now I have to reel it in. Can't just keep pulling. Find out in RP. Imagine if the bald guy did this. ओके. ऐसे टारगेट नहीं करना चाहिए यार. दिस इज बैड. Into the wind. This way. Be silent. Do you fear the dark? Wind strider. इन लैंटर्न्स को एक्टिवेट कैसे करेंगे बाय द वे? कोई तरीका है या ये अनएक्टिवेटेड ही रहेंगे? मैं हम सफर की तरह उलझा कहीं तो जाना. अच्छा, इससे Every little bit counts. throw other light sources at them like the forefathers did. लेकिन ये बताओ, यहाँ का कोरोजन जाएगा कभी? लाइक ये एरिया नॉर्मल हो पाएगा कि हम यहाँ पे आराम से एक्सप्लोर कर लें, या 24 घंटे ये कोल्ड वाला सीन रहेगा ही जैसे ड्रैगन स्पाइन का रहता है? बाटे मुझे क्यों तेरी वरना तकदीरें हैं आंसू भरी तस्वीरें. इससे तो नहीं होगा ना ये? वही चाहिए, फेंकने वाली चीज.
अबे यार लेकिन जब मॉन्स्टर्स होते हैं ना ये बहुत जल्दी स्टैक होने लगता है, बट थैंकफुली ये बहुत जल्दी एचपी नहीं खींचता है। अगर एचपी भी जल्दी खींचने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। It will subside after the request I was completely gone. अच्छा ये तो आ ही जाएंगे भगते हुए यहाँ पे। Wave. Remove. Converge. अरे Our bond is strong. As one with wind and cloud. Close your eyes. Do you fear the dark? Observe to dust. I'll settle this. Wind strider. अबे ये क्या हुआ? Time to बंद कर दिए लैंटर्न। आगे होगी प्लीज। एचपी जा रही है। go. Time to go. कहीं तो होगी। मुझको बसा ले इनमें तू। ये प्रॉब्लम मुझे उधर से करते हुए आना था, ना कि इधर से। उल्टा कर रहा हूँ मैं। बुलेट ड्रॉप नहीं है क्या? मुझे लग रहा था बुलेट ड्रॉप होगा। एक और था ना, एक और रिफ्ट सी थी, वो कहाँ गई? It's all yours. BRB, how far are you with the faction bounty progress? चेक करना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं। इसको क्या करना होता है? अबे मैं पूरा चक्कर काट के आ गया क्या? भाई मैं गोल गोल घुमाया हूँ। वाओ।
अच्छा, जितना आई थिंक आई के पास जाते हैं उतना जल्दी बिल्डअप होता है क्या ये? ये नहीं पढ़ पा रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है करने को। सुने हैं मुझे पर खोया के है 60। क्या नंबर आता है भाई हर बार जब चेक करो। उठ क्यों नहीं रहा है? Surge. Be silent. Close your eyes. Do you fear the dark? The night cometh. Observe. Fallen leaves adorn my... No one now. Up. Close your eyes. To dust. Observe. मुझे तो 80 क्रिट रेट भी ठीक लग रहा है, कम नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। Every little bit counts. भाई ये एरिया ज़्यादा अच्छा है भाई। नॉट क्राई में क्या 3-3 चेस्टें मिल रही हैं, दो एक ही फाइट करके। अब मेरे को मीम समझ में आ रहे हैं जो पहले जो लोग नॉट क्राई के लॉन्च पे बोलते थे। अब तो अपग्रेड होना चाहिए मेरे ख्याल से। बढ़ गया लेवल उसका। यस, क्राउन मिल गया एक पुल में। 100 एक्सप्रेशन दिस प्रीटी गुड। रिवॉर्ड ज़्यादा मिल रहा है। मैंने एक वो रील या शॉर्ट देखा था कुछ, उसमें वो कह रहे थे एक्सप्लोरेशन नॉट क्राई सो रिवॉर्डिंग, मतलब उसका मोटिव ये था कि यहाँ पे एक्सप्लोर करने पे कितना कुछ मिल रहा है और पहले इतना सब कुछ एक्सप्लोर करने पे कितना थोड़ा सा मिलता था। अबे यहाँ से भी ये इतना ऊपर है। Speaking of chest, did you see the old ass clip? No voice lines for chest. हाँ मैंने देखा वो क्लिप। बस ये बात है कि ऑफ स्ट्रीम देखा फ़ोन पे। The wind knows me. इनाजुमा वाज द वर्स्ट। और क्या भाई, इतना पजल पुजल करते रहो और बाद में मिलता क्या था? एक प्रेशियस टेस्ट या एक्सक्विजिट। यहाँ पे अच्छा वो एबिसल करोजन वाली चीज़ नहीं है, ठीक है यहाँ पे।
इट वॉज कॉमन चेस 95% ऑफ टाइम। नहीं, वो आई थिंक लीवे और मॉन्स्टैट में था। इनाजुमा में एक्सक्विजिट तो मिली मेरे ख्याल से, या नहीं? अब इसको कहाँ से ला के दूँ मैं ये? ये लोकल लेजेंड है, ये बस एनिमी है वैसे ही। Time to go. Time to go. इसको मारना है। इस पावर को तो कहीं तक भी ले जाओ फिर यार, जहाँ तक जमीन जा रही है। Time to go. Be silent. Do you fear the dark? Close your eyes. ये क्वेस्ट से खुलेगा या कैसे खुलेगा? Lunoculus वहाँ क्या कर रहा है? No, Bina was the absolute worst and that not even close. Open interactive map, look at the chest ratio. अच्छा, for the trail of it's probably up. हाँ, वो यहाँ तक तो आ रही है, बट यहाँ पे क्या करना है? अच्छा, इसको फ्री करना है। अरे भाई भाई भाई, हेलो। अच्छा, इधर पावर मारनी है, वो आएगी अब। अच्छा, ये पावर ऊपर मारनी थी वहाँ पे। मैंने वहाँ तक तो पहुँचा दी थी, बट मारी नहीं थी शायद। ऐसा मेरा प्यार है। इसके अंदर चेस्ट तो है ना, पता चले फालतू में ही कर रहे हैं। हाँ, चेस्ट तो है। क्या प्रेशियस चेस्ट है, क्या बात है। हाँ, इसका जंप वाला देखना था ना, कैसे ऊपर जाके उसको डीएक्टिवेट करेंगे। अरे ये बनना है भाई हमें, बन क्यों नहीं पा रहे इसको? ये तो नहीं चाहिए, इसे क्या चाहिए अब? खाली वो तो नहीं चाहिए इसको कहीं? हो गया। Use the power you have going the scenic route. ये तो उस साइड होगा ना। मैंने दूर वाला टेलीपोर्ट लिया क्या? ठीक है, कोई बात नहीं।
अच्छा लगता है। A fateful offering. बस हो गया। अरे ये सारे एक्टिवेट करके गया था मैं, ये बंद कैसे पड़ गए? ये बंद भी हो जाएंगे क्या अब? ये टेलीपोर्ट कहाँ पे है? Time to go. कोई क्वेस्ट है यहाँ की, लेकिन वो मार्क नहीं है अभी। चेस्ट भी नहीं आ रही यहाँ पे, चेस्ट खत्म। और ऊपर है भाई अभी। Stand with me. के भी कोने में आ गए हम। ओ अच्छा, ये खोलने होंगे ना पावर मार के। Question probably starts near pillar of Embla. ये तो बॉस फाइट आ गई। यहाँ पे तो कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। पिलर ऑफ एम्बला इधर। तब तो पा लिया, अब है
क्या कमी, यूं तो सारे दुख हैं बरसे, दूर तू है अपने घर से, तू अब दीवाने, जहाँ कोई तो तुझे अपना माने, ये तुझे बुलाने वही देश है तेरा। ये जो इनके ऊपर मार्किंग आ रही है, इसका क्या मतलब है? जो ये ऊपर इनके मार्किंग आ रही है, Observe. Night falls. Close your eyes. पढ़ने का तो कोई सीन ही नहीं है बॉस। जो है जो ये बताए, जाए तो किस दिशा में जाए वही दे, जो देश है तेरा वही कहीं। A moonlit night for all. Wind strike. Lightning purified. Dissipate. Be silent. Close your eyes. Be silent. Fear the dark. Three moons converge. One with nature. Stand with me. Out of my way. Beware the creatures of the night. Are you quite finished? Close your eyes. Night falls. You can clear the marks with power. ये मुझे लग रहा है ये इसकी डायरेक्शन तो उसी तरफ जा रही है। अब मुझे नहीं पता यही वाली है दूसरी है, Not to be sniffed. मुझे तो यही वाली लग रही है। तू कैसे भुलाएगा, तू चाहे नहीं चाहे, तू लौट के आएगा। ये लोग आगे अंधा भाग रहे हैं और फिर हमें इन्हें बचाना पड़ रहा है बाहर। Surge. As one with wind and cloud. Our bond is strong. Observe. Be silent. Close your eyes. Night falls. Into the wind. Clouds high. The birds. Dissipate. Be silent. Close your eyes. Be silent. Do you fear the dark? Fallen leaves. Adorn my... A new moon rises. Lightning purified. Stand with me. खत्म क्वेस्ट? वाह भाई। Perhaps these treasures might be of utility to you on your journey. Please, I insist. You see, no, this quest is for fallen night keepers from before. Good quest.
आते हो क्यों मासूम बन के मैं क्यों करने को बारिश तो ठहर जाऊं ना। अच्छा इधर तक एनर्जी पहुंचानी है और इसको चालू करवाना है। अब मार चल। हेलो मोनिक भाई हेलो। अरे Goodness, how the world has changed. लेट स्ट्रीमर आज तो मैं फिर भी थोड़ा सा ही लेट था क्योंकि लाइट चली गई थी पता है। Every nook and cranny come into fashion. अरे छोड़ दे मेरा पीछा भाई ये तो पीछे ही है पीछे आ रहे आए जा रहा है। As one with wind and cloud, wind strike. Our bond is strong. Observe. The night falls. Close your eyes. ले जा आ जा तू रुक जा आ जा इधर से आ देखें तू पत्थर तोड़ पाता है कि नहीं आ जा ले इनको फोड़ दे रहा ए जा फोड़ दे रहा इनको चल। वाह पत्थर तेरे से तोड़े नहीं जा रहे पीछे पीछे चल रहा है। कहाँ गया वो वापस चला गया भाग गया। ये क्या हो रहा है भाई इन्वेस्टिग ये क्या हो रहा है। मतलब यहाँ की एनर्जी से कोई लेना देना नहीं था मतलब अलग ही मैकेनिज्म था ये तो मतलब पुराने वाला जो था। Follow the trail of abyssal energy.
How was your yesterday night? तुम थे तो सही पूरे time. Damn, the animal did more damage than Flint. The funny thing is that I Goodness, remember all this. how the world has changed. Might I ask, when did the custom of placing treasure chests in every nook and cranny come into fashion? वो आम खाना गुटलियाँ क्यों गिर रहा है भाई? ये इसको कोई समझाओ भाई. जितनी चेस्ट मिले उतनी कम है. ये क्या था? रैंडम एक्सक्विजिट चेस्ट. How the world has changed. Might I ask, when did the custom of placing treasure chests in every nook and cranny come into fashion? Wolves have been seen in this area. Midnight travelers we want. Midnight. Clock कहाँ गई? एरी. Midnight ही हो रही है तो. Thank you for the lurk, Monique भाई. हेलो. चलो अच्छा इनको ही मारना है क्या? Be silent. Observe. Night falls. Be silent. To dust. Surge. Green moons converge. The wind knows me. Clouds high. The birds come. Out of my way! कोई ड्रॉप नहीं मिला. Alright, this'll do. It's all yours. Alright, this'll do.
Those who follow me were lost to the injustice of fate. सामने आ जाना कहाँ तुझे ये क्वेस्ट थी क्या या ऐसे ही All right. एक्सप्लोरेशन? क्या बार बार यही करा रहे हैं लोग? वार का गेट स्पेशल इंटरेक्शन, बट ये आगे क्या करूं? बार बार क्यों इंटरेक्ट करवा रहे हैं इससे? वुल्फ फैंटम ड्रिफ्टेड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बोरियस। क्या? बोरियस प्रेजेंस कुड नॉट बी फेल्ट। अच्छा, रात को करूं मतलब? नो वन टेलिंग यू डू इट अगेन एंड अगेन। आई थिंक रात को करने से वो वुल्फ वापस आ जाएंगे। बोरियस All right. This'll do. only Varka triggers the spacebar spammer. Follow the wind. ये क्या है? ये जगह पे अपने? मुझे नहीं लग रहा। गया हूँ मैं चाहत में तेरी, Brings a smile to डूबा my डूबा face. रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी। वार का क्वेस्ट लास्ट डे? हाँ बस शुरू करने ही वाला हूँ मैं, और 5-10 मिनट में। बात बनती नहीं तो Observe. Close your eyes. Fear the dark. Observe. They call this a pleasant surprise, right? ऐसे बन जाओ तुम
वो मैं से It goes where you came from. ये हुआ कैसे? Get with me. Close your eyes. The long sleep beckons. To dust. Surge, a moonlit night for all. As one with wind and cloud. Lightning terrified. Be silent. Close your eyes. Night falls. Observe. Night falls. Time to go. Fallen leaves, adorn my night. यार ये क्लिप करो। एपिक नहीं लगा ये? काज़ुआ की बर्स्ट खत्म हो रही थी, उसका पूरा स्वॉर्ड एनिमेशन स्लो में हुआ कैमरा मूवमेंट के साथ। इसको रीविजिट करेंगे तो इनेफा लेगा। अभी तक तो प्लान नहीं है, बिल्कुल प्लान नहीं है अभी तक। बेवफा सुन लो बेवफा, बेवफा न जाओ। डू आर का इसकी हाँ बस शुरू कर रहा हूँ और 5 मिनट बस। अबे ये तो नहीं बन गया कहीं? चाहत में तेरी, हाँ ये देखा ये बन गया भाई। चाहत में तेरी अब दिन गुजरते नहीं, रातें कटती नहीं, तस्वीर से बात बनती नहीं। कहाँ है एनिमल स्लाइम? अच्छा ये पावर से। Brings a smile to my face. कितने कैरेक्टर लिए नॉट क्राई में? फ्लिन को रीरन पे लिया, लॉमा इनिशियली ले ली थी, कोलम्बिना ले ली, जिबई ले ली। 4 कैरेक्टर हो गए अब नए रीजन से। 1 2 ड्यूरिन भी ले लिया, 4 5 हो गए। 5 हो गए नए रीजन के नॉट क्राई के 5 कैरेक्टर। ओ भाई ड्यूरिन को अगर मानना है नॉट क्राई वैसे तो देख लो। इधर कैसे जाएंगे? NFI रीरनिंग ही विल व्हेन नॉट क्राई एंड्स। वो तो अब किसको ही पता है कब होने वाला है, कब नहीं होगा। दिल ना लगाया हमने किसी से सुने यूं तो कहीं। ये वॉल्ट खोलते हैं और आर्टिफैक्ट चेक करके बस फिर अब वो शुरू कर देते हैं क्वेस्ट। इश्क है यार। लास्ट पीस क्या था हमारा? लॉग पीस है, हाइड्रो डैमेज बोनस। ठीक है
हो गए ना सारे। हाँ, अब देखते क्या मिलेगा। ये था लास्ट पीस, पहला पीस। अटैक सैंड्स विद डबल क्रिट। अगर कोई अटैक स्केलिंग आ गया ऑफ फील्डर तो मे बी ठीक है, देख लेंगे। HP विद नो क्रिट्स, बकवास। HP सर्कलेट नो क्रिट्स, गॉबलेट नो क्रिट्स, प्लूम नो क्रिट्स, अटैक गॉबलेट डबल क्रिट रेट, क्रिट डैमेज एंड डिफेंस। देखते हैं इसको भी। वो लॉक तो किया ना मैंने, हाँ। डिफेंस नहीं, अटैक डबल क्रिट डिफेंस 4 लाइनर, नाइस। HP EM नोप, CD HP अटैक नहीं। 3 पीस ठीक ठाक मिले। Then why would you pull? चलो आई थिंक अब स्टोरी कर शुरू कर लेते हैं। ए बार्ड मतलब वेंटी। Oh, it's from the Tone Deaf Bard. Apparently, he wants to hear all about our adventures in Not Cry. Maybe we can get some tasty treats out of him in return. Come on, let's go to Star Snatch Cliff. टाइम आ गया है क्वेस्ट शुरू करने का। चलो आओ। नॉट। शुरू कर रहा है क्या परफॉर्मेंस? Welcome back, old friend. And how should I be addressing you these days? The honorary knight of Mondstadt? The Tumaini of Natlan? Or the great hero of Nodcry? Well, you sure have your finger on the pulse. We've barely caught our breath since Not Cry, but it sounds like you've already heard about what went down. News travels fast on the wind. But before I can turn your tales into tunes, I need to hear them from the horses. My wine and my lyre are at the ready. So please, traveler. Amazing! Incredible! The Rapier of Solnari and the Doctor? Truly a tale for the ages! So I'm guessing the Wild Hunt is a thing of the past now that you've defeated the Rapier of Solnari? Seems that way. We were kind of focused on dealing with the Doctor, though. Well, that's good to hear. Hey, now that the Northern Abyss calamity is finally resolved, Varka must be getting ready for the triumphant return of his expedition, right? I haven't seen him in the longest time. He must have so many stories to share. Hooray! Let's call it half asleep. I was resting my eyes in the Thousand Winds Temple one day when I heard a commotion outside. It was a young knight who had journeyed there in search of trials and oracles after hearing some talk. In fact, all that awaited him were moss-covered walls and an angry ruin guard.
but he seemed completely unfazed, laughing heartily as he sent the Ruin Guard's missiles flying off into the horizons. हाँ तेरी बिरादरी का एनिमो यूनिट है तो तू तो प्रेज करेगा ही. Yeah, it. Hey! Is that all you've got? मीका है क्या ये? Oh, bring it on! ये कौन है? Like that. ये कौन है भाई? Giving up already? You're not half as tough as Varkas said. A young knight of Favonius trekking out to the Thousand Winds Temple in search of adventure. A bard in green clothes. कपड़े तो इसके फाउंटेन जैसे लग रहे हैं मुझे. Venti? I was just wondering how I was gonna track you down. Oh, so you were looking for the tone-deaf bard? Strange place to start your search. Hold on. Blonde hair, white hair. You must allow me to introduce myself. I'm Lowen, Vice Captain of the 5th Company of the Knights of Favonius and a member of the Expeditionary Force. Pleased to make your acquaintance. Oh, so you're Cryo unit. expedition, huh? Right. So that's why Paimon's never seen you around in Mondstadt. Hey, wait a second. We never saw you in Notcry. That's probably because when the Wild Hunt was still running rampant, I spent most of my time out on my own, making mincemeat out of monsters. I barely went back to base. Then, once the Wild Hunt calmed down, I got sent back to Mondstadt. Mixed blessing, if you ask me. No wonder we never saw you while we were dealing with the doctor. Deliver some letters. There's one for the Knights of Favonius, one for the church, another for the Dawn Winery, at least 10 of them in total. Jeez, how many people has he sent to deliver his mail now? Mika, Inefa, Lowen. He should just in fact, he's earned himself a new nickname. Let's go with Sir Writes a Lot. I'll have you know that poetry and letters were humanity's earliest means of expressing their thoughts. So, tone deaf or not, I wear the title of Bard with pride. And I consider... Wait, really? Darn it! Maybe Paimon should come up with some... Anyway, since this young man has... You sure are. This one is for the bard in green clothes. Doesn't really have an address as such. You could start by asking... I figured that since there was this punching bag here, Ruin Guard, I could get some That Varker is so slapdash sometimes. It's a good thing we happen to be nearby. Oh, he also said to... Nothing in particular. Just some idle chatter between two drinking buddies. But if I'm supposed to write back this time... Varka gave you a whole bunch of letters to deliver. My thoughts exactly. Assuming I can find the way. Hopefully the roads haven't changed. Well, why don't we have Mondstadt's honorary knight escort the... Let's go! Thank you so much, Honor. लोहेन को इंस्टीट्यूट कर दिया. लोहेन या लो जैसे भी बोला जाएगा उसका. The Wild Hunt. Andreas, get home safe. Why do my ears feel so hot all of a sudden? Surely there's no way anyone found the secret stash of cash in my office. That would be terrible. Grandmaster, bad time to get distracted. Watch out! Enemies approaching! Huh? Oh, it's just a few. This expedition is almost over. We just need to deal with these final few targets. We will make our try. Stormwind! Maria sweeping in! On me. Without the ratio of Sonari to direct them, it seems like all... If this is all that the Wild Hunt can muster now, surely the... Just like I thought. Grandmaster,
Based on Lightkeeper intel and our own reconnaissance, one of the suspected targets should be Good. You know the drill. Stay here and... Yes, Grandma. ये कौन है? We meet again, Andreas. लड़ना है इससे? कौन है ये? So, you've returned from Mondstadt. Don't you want to see what it looks like now? I was planning to take a look around there myself. Perhaps you could be my guide. What's this? An echo from 1,000 years ago? अरे भाग भी नहीं सकते, कितना स्लो चल रहा है ये। Everything seems normal so far. Here's hoping I'm just overthinking things. It's your turn, my friend. Come, Andreas! Although, for returning to your old home, perhaps Andrea... Boreas. Huh? Injustice. Corruption. Iniquity. Is the surface world still as wretched and foul as ever? Answer me, heir to the knighthood of Boreas. Looks like I'm not getting out of this without a fight. अरे भाई ढंग के कैरेक्टर दे दो इसको, या अकेला नहीं मार पाएगा इसको, प्लीज कुछ तो टीम दे दो, अकेला मत भेज दो भाई इसको। मेरे ही कैरेक्टर दे दो, 5 वैस को डाल दो, मैं चलाऊंगा भी नहीं इसको, कुछ तो दे दो प्लीज। बाहर का से मत लड़वाओ That's खाली। where things stand. PPS. I wrote individual letters for each and every one of you. Don't forget to write back. Everyone gets. I guess the Grand Master must have something. Even I got a letter. And Jean? Oh, yes. You mean Kai, allegedly for work, said he was exchanging intel. But I'd say that... I'm on best there'll be lots of familiar faces there. Really? Oh, that would be a great help. Our thanks to you too, Lowen. The other knights will help distribute the remaining letters. Great. But I heard that another challenger recently passed Boreas' trial. Well, with any luck, that wolf might be willing... Very well, but please remember... I will. Goodbye. ये मुझे ड्यूरिन जैसी वाइब दे रहा है लोहन, पता नहीं क्यों। Honorary Knight, you're still here? Huh? But Vark is coming back. True. From what you and Lowen have told me, the expedition has indeed accomplished its strategic objectives. It seems that Mondstadt no longer faces any threat from the perils of the north. And yet, for some reason, I can't help but recall some... If I don't make it back from this expedition, you'll have to assume the mantle of Grand Master of the Night. If it comes to that, remember to train the next Knight of Boreas in my stead. I've planted some promising seeds in Mondstadt, but some have yet to master the art of social interaction. Some don't yet understand that they too need protecting. And some, well, some might not even want to be a knight yet. What's wrong? Well, there's no need to frown. I'm going on an expedition, not marching to my death. This is all just a contingency plan in the event that I'm unable to return. And...
The lineage of the Knights of Boreas has nearly been extinguished twice in Mondstadt's history. The first wandering knight to claim the title arrived in Mondstadt 1,000 years ago, along with his wolf companion. He was as free as the wind. He left no succession plan behind. Even his name was lost to history. The title of Boreas could have disappeared from Mond, but he had an informal disciple, a knight named Ravenwood, who admired the Knight of Boreas greatly. Ravenwood's valor and swordsmanship earned him the wolf spirit's recognition. When the old aristocracy tried to regain power, Ravenwood came once more to Mondstadt's defense. From then on, the title of Knight of Boreas was passed down from Wolf spirit? You mean that? Correct. As you may already know, the Wolf of the North is the surviving spirit of an ancient god, and the Knight of Boreas serves as an intermediary between him and humanity. Lupus Boreas, who had never known what it meant to love, came to understand it through the journey with his human companion. In the end, he chose to allow his power to become one with the land. This was once a well-known tale in Mondstadt, but these days... Huh? The great Wolf King of the North came here from Nodcry. Although he doesn't like to speak of his past. In fact, he rarely shows as such. This tale can only be found deep within the Knights of Favonius library. The Grand Master didn't disclose any concrete objectives before departing on his expedition. I couldn't help but wonder whether it might somehow be related to Nodcry's. I kept my speculations to myself, however. Sharing them would only spread unwarranted suspicion. You experienced the turmoil caused by Deval and the East Wind's actions for yourself. No wonder Varga wasn't clear about his motives. Is that what he was worried? Very possibly. He was probably also reserving judgment. Having heard about your experiences in Nodcry, I now suspect that the Grand Master, and as it turns out, the Calamity born in the North, wasn't an ancient god, but rather the Wild Hunt and the Doctor. I guess we were both... Yes, I completely agree. The tide can turn rapidly in times of battle. It's a leader's responsibility to prepare for every possible contingency. Even if his contingency plan never needs to be put into action, I'm sure the Grand Master is relieved to know that it's in place. That turned into a pretty long conversation, huh? We should probably go deliver those letters to the Angel Share now. अभी बाहर वाले बंदे से बात हो जाती है कि जल्दी एफ When you're दबाने के चक्कर mixing में. drinks in hot weather, start by pouring in cold water and add ice cubes. Then drain out the water before adding the other ingredients. How's that for a secret recipe? Maybe it's worth a little intel in return. Please. I've known that little trick for a good 10 years at least. You'll have to offer something a little more substantial if you're serious about trading. I know there's no one else in the tavern right now, but do you two really need to talk so loudly? Especially if you're supposed to be exchanging confidential information. Hiya, Rosaria, D-Luke! Paimon knew we'd find you here. Looks like it's about to... A little liveliness never killed anyone. Traveler, Paimon, what brings you our केया की भी आवाज चेंज हुई है क्या? केया का वॉइस एक्टर चेंज हुआ है क्या? Once again express my sincere condolences regarding your late father and the incident with Eric. We make absolute... I hope you will... From the look on your face, I'm guessing the Grand Master is still refusing to drop... He nags like an old man. Huh? Drop what? Nothing, really. Before leaving on the expedition, Varka came here to chat with me over a drink. I failed to avoid it. He, asked me if I'd consider rejoining the Knights of Favonius.
and I declined. He expressed his regret about everything that happened and asked me to reconsider. That's all there is to it. Yeah, right. Sounds like you skipped a lot of details. There's clearly... Whatever details I chose to omit are in the past. You say that now, but back then, you couldn't let it go. You and the Knights of Favonius were constantly at odds. I wasn't seeing the full picture. I've had a lot of time to... But my answer remains unchanged. I'm not rejoining the Knights of... Both the Grandmaster and the Acting Grandmaster are too upright and honorable. I can't see the shadows that lurk beneath them due to the size of the organization they lead. They need someone on the outside to keep... If I had a Mora for every time I've heard you repeat that argument. I actually don't disagree with the first part of what you said. But don't you think someone can keep tabs on things from the inside? When you join an organization, you're bound by its rules, no matter how free it may seem on the surface. You think so? Never mind the Knights. Have you honestly ever been bound by the rules of the Church? Good question. Have you considered that maybe that's why I chose to join the Church and not the Knights to begin with? Are they arguing or not? It's kind of hard to tell. मुझे भी ये नहीं समझ आ रहा ये लोग चाहते क्या हैं लड़ तो रहे हैं Oh, kind of like the contingencies Gene was talking about. The more... हमें क्यों बात What करनी should है I सबसे report back to public order inside the city? Monster activity in the wild? My reply won't be a long one, as usual. वो कहाँ गई If you hadn't had to deliver that guy's mail, you wouldn't have been subjected to all this tedious arguing. When I write back, I'll tell him to quit making trouble. It's no trouble. Lowen did most of the work. We just volunteered to do the last leg of the journey. Mostly so we could come say hello. So you see what's really going on here? All three of us fell for that old rascal's scheme far too... Huh? Scheme? What do you mean? No. While I'm sure Varka knows full well that Diluc would never agree to rejoin the Knights, I believe the sentiments he expressed were genuine, as was his... There are people like Kaya and I, and then there are those who are true champions of justice to the core. Those people are the most susceptible to being driven to extremes by great upheaval. It's happened in Mondstadt before. Not only that, but it happened to a Knight of Boreas. That'll really hit home for Varka. And that's why his nagging is even more persistent than usual. Yeah. So no one's told you this before? The lineage of the Knights of Boreas had nearly been extinguished twice in history. The first was at its inception. The second was the case I was alluding to. Oh! Wasn't Gene telling us about this? Wait. And then we got... I happened to hear about it from Varka once when he was drinking and started yammering on. The second crisis in the Knights of Boreas lineage. Although the Knights of Boreas are meant to be intermediaries between humans and wolves, in practice, very few of them have been truly recognized by Lupus Boreas over the... Of those who have, the best known are the first Knight of Boreas. But 500 years ago, there was one who earned the respect of Boreas even before gaining the title. He was a disciple of Rostam. They thought he would become the mightiest Knight of Boreas He was the perfect knight. Righteous, principled. His name was... अच्छा रोलैंड आ गया Well, apparently his original title was the White, but he lost countless comrades during the Abyssal Calamity 500 years ago. The endless bloodshed stained his sword and armor a crimson as deep as black, transforming the White. After that, he threw himself completely into battling monsters, leaving Mondstadt and the Knights of Favonius behind. To this day, no one knows his final whereabouts.
It's hard to say whether the loss of an important figure in his life is what drove him to the point of a... But had he known that the Knights of Favonius would always welcome him back, perhaps things would have turned out differently. So if you want my opinion, the reason why Varka keeps asking Diluc to rejoin, despite knowing that he'll never say yes, is to let him know you're not alone. After all these years, he's still at... शुरू कब करी थी हमने quest? Turns out Varka's a lot more thoughtful than he lets. Anyway, आधा घंटा तो हो गया होगा हमें नहीं? something about this whole Boreas business that Paimon isn't really getting. If so, why did Jean say that Boreas and the Wandering Knight only arrived here just 1,000 years ago? That's a great idea! These Varka SQ leaves. जब तो तुम कह रहे थे start Varka SQ, start Varka SQ. What's going on here? Was Wolfendom always like this? लोहेन भी आ गया, रोलैंड भी आ गया. The Wild Hunt? What are they doing here? Watch out! प्लेन दे दो बस, हम अपने आप कर लेंगे इनका हिसाब. बस बहुत बढ़िया. Be silent. Close your eyes. Fear the dark. The night cometh. Are you alright? Oh no! What? Phew. You scared Paimon stiff! Stop right there. Answer me this. The two letters. 2 letters? Wasn't it? Okay. Well, Paimon's coolest naive expression doesn't appear to be an act. Hey! What are you trying to say? Wait. What are you trying to say, huh? Huh? Paimon passed a test? Really? Huh? You may dispense with your suspicions. The Wolfpack has borne witness. They fought against the aberrations that encroached upon this land. And our attackers showed no ability to disguise themselves this time. Wanted to end this miserable SQ. It's absolute trash. This patch gets 1 on 10. 1 for Onward Quest and 0 for Varka adds up to 1. I will await you at the usual. Well, if the boss of Wolfendom has vouched for you, I guess I should apologize for doubting you just now. Sure was. Fortunately, my experience in Nodcry didn't go to waste. Turns out the Wild Hunt all feel the same when you stab him. Something seems wrong with that old wolf, though. Lupus Boreas, not injured. Why so weak? Am I not strong enough? You are not to blame. With your Iron Claw, you successfully blocked their attack. They followed my trail from the distant We meet again, human loop. So, are you saying that the Wild Hunt we just got attacked by came all the way from... As you know, I stand before you as an incomplete being. I am but one remnant of the god Andreas, the source of this turmoil. Huh? Now Paimon's even more confused. How can you be in 2 places at once? For many gods, housing a part of their soul within an object is no difficult feat. But those who can perform such delicate partitions as this are rare, even among the gods. The Wolf King, Andreas, was particularly adept in this art. Otherwise, no remnants of his soul would have survived till the present day. Huh?
The bard's back? Tone Deaf Bard? What are you doing here? Maybe the god of Animo guided me here. For who better than a bard to do the honors? Lord Boreas? As you wish. Lupus Boreas wandered the frozen tundra and stumbled into the Sealy Hall. Enchanted by their song, tender as the dawn starlight, and curious about the ways of humankind, the wolf bade farewell to his home. As the high tower crumbled and the fierce winds fell silent, Lupus Boreas, who once had hunted with the storm winds himself, looked within and inquired, was the shelter he provided for humanity really any different from that? The wolf entrusted those under his protection to a new god and quietly returned to the frozen north. There, in a palace long since abandoned by its former master, the great wolf closed his eyes and slept. 500 bitter winters passed, then 500 equally frigid springs. He slumbered undisturbed until a knight stumbled in from the cold. Just as the knight asked the wolf to join him on a journey south, to see once more the land that had all but faded from his memory. The gentle wolf, unwilling to refuse the human's earnest plea, split his soul into two halves and left his home once more. Seeing how the ice and snow had given way to verdant plains, hearing the laughter and song that now filled the once somber city. So, this is the world the humans dreamed of. Though the knight's journey was not yet over, the wolf chose he had written the end to his story. What knowledge he had been gifted flowed into the... Well, that's how a bard would tell the tale. Lord Boreas, is there... There is no need for you to... So that's what happened. You returned to Mondstadt with that knight 1,000 years ago, and then... You need not feel remorse on my account. That was my answer, my decision. If anyone should feel regret, it is the part of me who remained in Notcry. That is surely why those vile aberrations were able to exploit his weakness. But we followed Boreas' trail in Nodcry. Andrea should still be slumbering by the lake, and there's more. I detect another familiar scent from across the ley lines. A scent that reeks of blood. Oh, the White Knight who became the Bloodstained Knight? The mightiest knight of Boreas? But wasn't he from 500 years ago? I remember him as just a man. His lifespan should be no longer than any other of his kind. But before he severed his connection to Boreas, it was the ancient kingdom of Conria, as you call it. Beyond... If you want to get to the bottom of this, I'm afraid you'll have to make another trip to Nodcry. As luck would have it, another old friend of ours just so happens to be free right now. If you ask him... if even Mondstadt has been affected... Varka. I believe too many past... Alright. Wish it could be me, but I accept that we should... I'll stay here and deal with any... I stay in Mondstadt too. Razor, give me your... इसको इससे कोई स्वॉर्ड भी मिल रही है हमें? It is a wolf spirit. It contains my power and thoughts. Though I have given him a piece before, this should bring him new strength. The Dominator of Wolves once bestowed the power of his soul upon his pack. But human hearts and flesh cannot bear the soul of a wolf directly. It would be akin to forcefully merging a human and a wolf into one being. They would descend into... to prevent the entanglement of souls. The most I can do is temporarily house my power and thoughts within claws and fangs wrought of steel. Although, truth be told,
That knight does not lack for power. What he needs more is the thoughts within. But I shall leave this for him to explain. The Great Wolf King of the North remains strong for now. I will protect Lupical. Just give me the word whenever you're ready. Any questions before you set off? Better ask now. 500 years ago, he believed firmly in his own ideals of chivalry. Neither his mentor, the wolf pup Rostam, nor the Grand Master, known as the Lion of Light, could persuade him to temper his obsession. Low-end as a member is better than Varka. Varka for standard, low-end for premium. Any questions before you set off? Better ask. All right. Over to you, Dvalin. Oh bhai. The Knight of Boreas awaits below. We must part ways here. Barbatos and I have other plans. We will meet. Alright! Hey, wait! How are we getting down? Free fall. Hold the line! The enemy's on the brink of Grandmaster! Haha! Reinforcements! It's about time! And I'm on too! We're just about hanging in there. Most fight? But they have farewell. Guess they're retreat. So that Wolf of the North lookalike, that was Andreas? But why would he? Forget that. We can save the details for later. He was the enemy boss, right? There's no point chasing after him. We've crossed blades already, and it ended in a stalemate. Right now, there's nothing we could do about him. True. We're still not certain of his true identity, but whether he's a god corrupted by the Abyss, or killing him might be just about possible. Especially now that the difficult part is... Huh? What do you mean? No. Judging from our skirmishes so far, I don't think he's got any special abilities of that caliber. Nor does he have the ridiculous level of power wielded by the Five Sinners. But, compared to Rerir, our current foe clearly has a better understanding of how to exploit Nodcry to his advantage. Particularly when it comes to Andreas' remnant soul. Exactly. Sounds like you realize what the crux of the issue is. I managed to cut off a sample from our foe, which Albedo and Duran are analyzing as we speak. Meanwhile, our other allies should be making their way home from their own... No V4 beta Let's changes. discuss this further when they're back. We still have some किसके साथ हुए थे changes V4 वाले? can finally be declared. ये तुम्हारा वो है ना कि फर्स्ट टाइम जब कैरेक्टर दिखा फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद फिर 2 हफ्ते बाद कैसे कैसे Probably gonna be in the biggest tent, right? Looks like a bunch of people are there already. Why don't we go chat with them? अच्छा तुम लेनेया की बात कर रहे Hey, हो honorary knight. Albedo and Duran are just wrapping up their analysis. You want to wait? Great. कंटिन्यू टू मिंगल क्यों आ रहा है भाई हेलो And that's where things stand. Intel from the Frost Moon Scions and the Curatorium of Secrets corroborates this.
No disturbances have been detected in the space where Rere resides. What we are facing here is a completely new foe. Summarizing current situation. To confirm, the present leader of the Wild Hunt is the creature resembling a wolf. Andreas, god of... More precisely, it's the external will that has seized control of Andreas' spirit, namely Roland, the bloodstained knight. Whoa, 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 whoa. Hold on. I'm completely lost. Isn't Roland some monstatter from like 500 years ago? How'd he suddenly get wrapped up with a god from 1,000 years in the past and the present day Wild Hunt? Allow us to explain that part. Are you familiar with compensation mechanisms? When an organism sustains damage, relevant tissues will undergo changes to offset the loss of function. For example, when one kidney is damaged, the other will be strengthened to compensate. Or, when a main artery is blocked, the collateral vessels become more active. Similarly, when the Wild Hunt lost their leader, the Abyss harnessed the memories that flow throughout the ley lines to fashion a new one, fit for the present circumstances. That new leader is a mirror image of Roland, the bloodstained knight. Right. No matter how strong the compensation is, it will never quite match the functionality of the original organ. The Roland replica can't possibly imitate Barir's overwhelming power, nor his ability to disguise himself. So, the Abyss made use of the connection between Roland and Boreas to compensate for this lack of power. The replica corrupted and took control of Andreas as he slumbered by the bank of Eimsvartnir. However, exactly why the Abyss chose Roland to mimic, and it... I guess he must have gotten caught up with the Abyss or Nodcry somehow during his wanderings through Tevat. But Okay, Paimon gets all that, but we can't kill him right now because a dead god may prove more dangerous than from intelligence gathered during the expedition. We have reason to believe that the power released when a god is felled can have catastrophic consequences for us mortals. Worse still, the wrath that remains after a god's passing becomes a source of endless turmoil. Once god remains contaminate the land, they will persist for thousands of years. This land has already been ravaged by the Wild Hunt. If we add god remains to the mix, it'd be like adding salt to an open wound, placing everyone who lived... Query. While I can indeed find records of disasters caused by god remains in my database, there also appear to be cases of gods dying naturally with no ill effects. In that land, the passing of the Pyro-Archon's flame is a common occurrence throughout history, and even the part of Andreas who remains in Mondstadt has experienced... Great question. Glad you asked. Honorary Knight, you said Lupus Boreas gave you a token to pass on to me? Please. Come forth, Boreas! This form has come to the end of its time. I'm afraid I can accompany you no further. My soul will fall into silence, and my power will flow into the ley lines of this land. Perhaps do not grieve for me, for this is the end I have chosen. Instead, remember that one day, your wandering too must come to an end. A final wish before I slumber. You saw it too. You must have keen powers of perception. Not that it surprises me. That was Boreas' final thoughts before merging with the ley lines. In his final moments, he made a choice to give everything... Sounds like Andreas spent thousands of years searching for his... Yes. And now our task is to return the answer he found. That only then can he break free from the corruption and control of the Abyss, and make that decision once more. I see.
I would say that planting thoughts inside the mind of a god sounds a little far-fetched. Wait, we already have a perfect solution? Then why are we... Ha ha ha. If only it were that simple. Unfortunately, this one thought alone is unlikely to be powerful enough to break through the Abyss's control. We need to find a way to make the thought within this sword stronger. For now, Boreas needs all his remaining... However, if we can collect those fragments... So we need... You don't need to worry about that. Most of them are already inside this sword. I've been collecting them during... Huh? I mean, it's an expedition, not a stroll in the park. Each step of... Not just the wild hunt in the Abyss, but ancient gods remain... Sounds like this plan was a long time in the making. As a matter of fact, I did. I caught a glimpse of fate's reflection. But I can't take credit for it. It was all thanks to the help of a few friends. Still, all I foresaw was that an abyssal calamity was brewing. Instead, we've had to make best guesses, prepare for every possible scenario. Sure is. Just one crucial step remains. We need to gather the last few wolf spirit fragments scattered around Nog. According to what Boreas told me before we left Mondstadt, his form was at its most unstable at the beginning of his journey. That means the fragments here should be the most powerful ones. But of course, we've been tied up fighting battles since the day we set foot in Nodcry. First with the Wild Hunt, then with the Doctor. So, it wasn't until recently that we were finally able to confirm the status of the wolf spirit fragments. We now know there are... Okay. I managed to gather one fragment before Roland reappeared. I also have a confirmed location for the second. As for the third fragment, we've identified a general search area to focus on. But we'll need all hands on deck to pin... The final snag is that since our foe is a replica of Roland, he too will be aware of Andreas' history. He's sure to try and sabotage... With our foe being from Mondstadt, it's our duty as Mondstadters... And since the Wild Hunt is involved, the light... The Clink Clink Crumb-Cake craft shop will also help in any way we can. So what do they need me here for? Wait, I think maybe I signed a contract at some point. Didn't exactly scrutinize it. Ah, great. Knew I could count on you all. Lastly, our friend from the Curatorium of Secrets will provide intel and relay battlefield communications. So, you'll be darting back and forth across the battlefield, dodging the Wild Hunt and the shadow of an ancient god. I'm impressed by your courage. Rating for Yehoda updated. Higher quality ingredients will be used to prepare your... Darn it! I should have known this payday wouldn't come that easy. I'll deal with the second wolf spirit fragment, which we already know the location of. The moment you make any progress with fragment 3, Traveler, could you join me in retrieving fragment 2? All right, time is of the essence. Let's move. Today new 1 year old on Japan song release joining and also specialist apparently rated as the easiest level 33 master in whole game and everyone is sending SS of the first another AP of that and makes me think well the rating must be true then. Acha, all perfect. Good luck. Yoda values as 5 stars after this in NFR's database. वैसे देखा जाए तो सब 5 स्टार थे खाली जहोदा को छोड़ के नेफा फ्लिंस ड्यूरेन एल्बीडो वारका सब 5 स्टार थे बस जहोदा को छोड़ के Varka is 4 star enough, Razor does more damage.
इनेफा भी पोलाम है ना भाई, सारे पोलाम है। Didn't you say fragment 2 was supposed to be right here? Where the heck is it? Seems like we've run into a slight hindrance. Can I leave this to you, Honorary Knight? Traveler, Paimon, when this is all over, I'm gonna invite you around for a drink of... Whoa, whoa! Stop thinking about Mondstadt's wine and get your head in the game! You can't be daydreaming about alcohol before a battle! Huh? Well, all right, just trying to lift our spirits a little. You want to see some photos I took of me and the knights before the expedition, maybe? Shut up, shut up, shut up! Can we please just focus on finding the wolf spirit fragment? ये बंद क्यों हो रहे हैं? कहाँ चले गए ये? रिस्पॉन क्यों नहीं हो रहे यहाँ से? वो भी बंद हो गया। I don't have to thumbnail this split from the top because of the AP grind. Wow. I once got Boreas to explain You to have me to how he create a stores his chain soul of it. inside objects. All वो I तो need to पता do है। is transfer it to my sword. Just like back at the camp. But this time, you'd best step back. But वो एबिसल कोरोजन की वजह से वो अपने आप बंद हो रहे थे, क्योंकि ज़्यादा आगे फेंक रहा था मैं। So, you're saying you don't know how to love people, and you don't understand human love either. Sorry, I just think I have a funny feeling that by the time this journey ends... No, you're wrong. There is no redemption at the end of this path. Even if I am stained black with तो ये तो रोलैंड की क्वेस्ट लग रही है वारका से ज़्यादा तो। will remain as white as snow. If pledging allegiance to the abyss is the only way to sever the injustice of fate, then I shall serve in its name. Oh, sure enough, this place has been corrupted by Roland's will. Whew. I'm fine. I was prepared for this. We got here just in time. The fragment hasn't been fully corrupted yet. Assuming we can undo the damage, it should... Purifying the abyssal corruption. Could you try... Firstly, to test whether it's possible. And let me think. How is it explained? Actually, neither do I. My personal best right now is AP9. Nice. I thought it might mean some traveler. मतलब लगातार तुमने 9 songs for ancient names, correct? level -9 If I'm not मतलब mistaken, the Night Kingdom was like personal a best war of minus foreign में कैसे हो concepts, सकता है? and you were trying to capture the concept belonging to a particular ancient name. I'm thinking the same basic principles should... Okay, but back then, we had a bow and a... This wolf spirit fragment is like a puddle compared to the Night Kingdom. Thoughts and emotions are like interwoven threads. They can create a net. Thought is the anchor for a being's existence, through which emotions are drawn forth. Also, we barely know any... Well, maybe you could try this. What is it? It looks... It's an unsent letter, written by the wolf pup Rostam, Knight of Boreas, from 500 years ago. It was meant for his disciple, the White Knight Roland. After Rostam lost his life in the Abyssal Calamity, Roland left Mondstadt to wander to Vat. Grandmaster Arundelen had wanted to deliver this letter to him. But trying to track Roland down was like chasing a shadow. He never did find him,
And so this letter has been sitting at the night. Quite the antique then. Yeah. Hey, what happened to... What can I say? Some people like to wait till they've got all their ducks in a row before taking the first step. But anyway, don't they say that poetry and letters were humanity's earliest means of expressing their thoughts? Can't hurt to give it a try, surely. Whoa. It actually worked? You really are making this up as you go along. So the assimilation of souls really can be reversed, just like he said. If what you say is true, the monsters I've slain, the justice I have sought to uphold, for mortals to escape this tragic fate, there's only one path. A great and ancient kingdom was wrongfully cursed, turning its inhabitants into monsters. The code of chivalry tolerates not such injustice. If Abyss be thy name, I pledge to you my loyalty. And that is where the blood-stained knight's tale came to an end. With that, he bade his humanity farewell. I dare say you must find it quite ironic, Knight of Boreas. That I, Dainsleif? No. Bore a striking resemblance, but that wasn't him. While we gazed into the past, he was gazing right back at us. Could it be? So that's what happened. After leaving Mondstadt and wandering the land, Roland ventured underground and saw a revelation from the visionary. AP-9 means a number 9 indicating how much away you are from AP. अच्छा. So 9 grades is the score and rest is perfect. अच्छा. Roland reminds of Rarier. फिजिकली तो वैसा सा ही लग रहा है और थोड़ा सा बिटरेट भी लग ही रहा है. देखते हैं आगे क्या है. Once he had learned of Conria's fate, he saw the god's judgment as the greatest injustice. So he surrendered himself to the Abyss, giving them his knowledge, his power, his everything. That's why the Abyss... Uh-oh. Does this mean we have to take on the Vision? I'm inclined to agree. If our enemy could see the future, both the Wild Hunt and Roland would be acting with far more lethal precision. But even without the Visionary's input, Roland still has an intel advantage we can't afford to underestimate. Every minion of the Wild Hunt serves as Roland's eyes and ears. We need to think one step ahead if we want to outmaneuver him. And on that note, I have a plan I want to discuss with you. Well, the fewer people who know, the less likely it is to get leaked. Besides, it wasn't a fully formed that about covers it. Sorry to ask so much of you again. No plan is free of risks. At least this one actually gives us a shot at fully eliminating the danger posed by this ancient god. Surely that's got to make the risk worth taking. If I fail, Anselm and Albedo can take the reins. Not to mention we still have Jean in Mondstadt. Oh,
has to be another way! If only there were. But I don't think our enemy will give us enough time to find one. Hey! Are you guys done here yet? Ah, Yehoda! Yes, we've successfully... Nope. It's a total disaster! More wild hunt monsters than I've seen in my whole life! We need backup urgent... Come on, we're out of time. You'll just have to trust me on this one. What can I say? I'm not the Grand Master for nothing. I'm counting on you, Honorary... Fill me in. What's the situation? We ran into resistance almost as soon as we set off. Albedo said we should split into 2 teams and continue searching while he and the others kept the wild hunt occupied. Good call. Locating the wolf spirit fragment is our key objective. Well, it seems the enemy figured as much too. Now, both search teams... Before we ran into trouble, the 2 teams are holed up here and here. They should have a clear idea of the fragments... But the wild hunt is stopping them from relaying messages back, right? Do we have any more... We can't spare troops from any of the fronts right now. The logistics company is standing by. Hanefa! Designated drop point reached. The logistics company was assisting Aino with the production of the strategic reserve. But after learning of the situation on the front line, they requested to be dispatched immediately. Amazing. Just... Hey, seeing as you can fly and all, it shouldn't... I regret to say that without the workshop's catapult, and with my short-distance propulsion module on cooldown, I will only be able to return to the battlefield after another 5 minutes. Please, the logistics company has very limited provisions, only enough for a single battle. Both. Once one team has been rescued, the remaining forces will be free to support the other. We'll move... Sure thing. Something's not right. The Wild Hunt's offensive doesn't seem to be getting any weaker as the battle goes on. Are they getting Don't get dragged into the enemy's rhythm. Logistics company, scout out the area. Look for terrain we can use to our advantage. Yes, sir. Reporting in, sir. We've identified viable sites for deploying... Good. Wait for my signal. Logistics company, deploy! क्या बकवास है इससे जो तो फ्लिन दे देते मार के ही आ गए होते उसको Honorary Knight. Thank goodness you're here. Be careful. There's no end to these monsters. However many we kill, more keep coming. Just as I thought. Well, they're about to get a shock to the system. We'll wipe them out faster than they can replenish their numbers. We just have to hold on until the logistics company is ready. Is that the signal to say they're ready?
अरे मर क्यों नहीं रहे? Got a bit too cocky. Off the ante! Yeah. Ready? Fire! The enemy has sustained heavy casualties. Should be a while before they're strong enough to pose a real threat again. Use this time to catch your... Yes, sir. We've narrowed down the search area for the final fragment to this zone here. That's not exactly very narrow. We split the search area between us and... Either way, I was about to go... Absolutely. We've run right now that they've lost their... Ugh. Looks like the same situation here. They just keep coming. Was that an Iran reference? पता नहीं, मैं तो skip कर दिया वो बात सुनने का मेरे को मन ही नहीं था. You keep him busy while we work on getting rid of this god-awful... Understood. Everyone got that? Yes, sir! Not that the bombing. अच्छा. Hey, they're running out of steam. Now's your chance. Affirmative. Sorry to keep you waiting. That's their source. It was hidden in the mist. If we destroy that, the Wild Hunt won't be able to summon any more reinforcements. Knights of Favonius! Charge! Thunder! Huh? Ooh, I'm glad that's finally over. Brave knights, on behalf Oh, it hasn't been that long. I thought you'd be done with this now. थोड़ा सा लेट शुरू किया ना मैं, पूरा स्ट्रीम थोड़ी. लेकिन I think 1 घंटा 10 मिनट के आसपास तो हो गया मुझे करता हुए शायद. There's no need to be so formal. When it comes to the Abyss, we're all in this together. Now, please tell me every... Very well. We've narrowed down the search area for the final fragment to this zone here. Yes! Now it feels like we're... I'll say, it would be our pleasure. Much obliged. The hiding in the mist trick again. These guys must be easily... You all know the drill. Yes, sir! Maria sweeping in! Burn! Lightkeeper, prepare to dispel the mist. Knights of Favonius! Charge! Thunder! Off the ante!
इन क्वेस्ट में ये मेन कैरेक्टर को तो मरने ही नहीं देते ना, भले कितना भी डैमेज पड़ जाए, कुछ भी हो जाए। This wild hunt doesn't know when to give up. Traveler! Mr. Varka? Just like last time. Don't underestimate us, Grandmaster. We can hold... Huh, that's the spirit. Stay on your toes. Either we all march back to... प्लेन्स और कोलंबिना वाली टीम दे दो भाई मेरे को। The final fragment is right there. Don't let me down. It seems. Yeah, and with no corrupted fragments or ambushes along the way. I have to commend your chivalry, Sir Ro- A true knight does not resort to underhanded tactics. Were this body not a false one created by the Wild Hunt, nor would I countenance those monsters to taint our duel with their presence. If you need a moment to rest, take it. Victory will be mine, regardless of whether the path to it is the one I would wish for. Save your breath. If you want to fight, let's fight! As you wish. Then let us... Is everyone all right? My granny fights better than these rookies. It's Egbert I'm worried about. For a moment there, I thought I might never taste the sweet wine of monsters. Hey, stay put, you guys. Leave the rest to us. Forget us. We can take care of ourselves. You're the only one still standing. We can't lose our Varka. Please. You're holding back, Knight of Boreas. This duel does no justice to the way of chivalry. I wield the power of a god, while you dare not swing your sword with true intent. If you continue on this path, your plan is doomed to fail. How can a helpless lamb hope to tame the heart of a wolf? You're on. Andreas's question, Boreas's answer. The means to bear a soul, though the false path may be wide and welcoming, only destruction lies at its end. It's over. Your sword lies shattered. The wolf spirit and the thoughts you blindly placed your faith in have nowhere left to dwell. Join me and pledge your allegiance to the abyss, Knight of Boreas. One day you will understand that the only righteous path for those of true virtue is the path of darkest truths. For the next part, it's over to you, Outlander who caught the wind. The sword is unbroken. Looks like I'm no longer in reality. This must be a space built from the entangled consciousnesses of Boreas and Roland. There's no way back. And all that lies ahead is the Wolf's Maw. Bombing वाला scene, reinforcement bombing. Huh. Guess. A Favonius sword? Who left this here? Lonely warrior.
take me to see him. On me. Huh? No matter the epoch, the world is awash with corruption and injustice. I have aided the oppressed and righted many wrongs. I have slain sinners and delinquents. I have slaughtered tyrants and demons. But however mighty one's blade, before the great injustice of fate, a mere mortal can but bow their head. There is only one way to save them. Who are you really trying to convince? क्या समझ रखा है इसको इन लोगों ने भाई? नहीं है इसके बस की, टीम दे दो इसको यार। Got 3 grades, 1 miss. AP seems able. I'm not far off. Praise for my nails. Is this the fairest shadow? It doesn't look like an imitation. The title of Boreas must find an heir. मेरे को लगा कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा पहुंचने के लिए। The scent that reeks of blood appears to be getting stronger. On me. Looks like I can just jump right over these obstacles. Wow. क्या पकड़ता ही नहीं है ये? क्या चक्कर है? पकड़ा ही नहीं यार, क्या बकवास है यार ये। इसके पास कुछ होल्ड वोल्ड है क्या? ई होल्ड या कुछ है क्या इसके पास? अच्छा, होल्ड ही। ये तो बोल चुका है, ये फिर से वही बोल रहा है। बोल चुका था ये। Even the most fearless hero cannot fight what fate has ordained. And even the holiest god cannot escape the shackles that bind them. Lupus Boreas, if you still harbor love for humanity, then you must surely know. There has only ever been one way to save them from injustice.
Surrender to the abyss. Malicious lies! अच्छा इसे एक्स्ट्रा पावर मिल गई, इसकी अटैक स्पीड बहुत तेज हो गई। On me. On me. Maria sweeping in. Stormwind. Stormwind. Maria sweeping in. My old friend. This is not where your path ends. You must continue on. This wind feels less than welcoming. I'd better take shelter. उड़ के पहुंच जाना चाहिए था इसको वैसे। फिर पीछे फेंक दिया। I can't hide from it. You must deliver it. Your path cannot end here. You draw near to the heart of the wolf. Even if you had an army of 10,000 men, in the end, you must face this fight alone. Lonely warrior. Step forward. ट्रैवलर आएगा, पीछे से कट सीन होने वाला है कुछ ऐसा मेरे को लग रहा है, लेकिन ऐसा तो लग रहा है कि स्टोरी अब खत्म होने को आ गई है। The heart of the wolf? डेंजलिफ? नहीं, रोलैंड। Roland! After countless bloody battles, trials, tribulations, and hardships, I, with my mortal flesh and blade, attained power to rival that of the gods. But you know better than I that a mortal's prime is fleeting. In 5 years, maybe 10, age will snatch your strength. The power you take such pride in will fade to naught, disappearing like dust in the wind. Your fame will be as fleeting as firewood beneath the starry sky, lit at dusk, dead by dawn. Utterly insignificant. Oh yeah? Be that as it may, the fires that burn down here blaze more brilliantly than the light of 1,000 stars. They blaze for but a moment. 100 years from now, your earthly flame will be long snuffed out. And those you once illuminated will be left cowering
in the cold and empty night. Ha! No. They'll remember me in 100 years, just as I remember all of you from centuries ago. That's the thing about firewood. From the embers of a dying flame, a new fire arises, burning bigger and brighter than ever before. क्या खेल चल रहा है यार ये बकवास. अरे यार. A knight's duty is to save others, not demand things from them. How can one call themselves a knight while placing their hopes in generations to come? Well, as long as I put an end to you here and now, I won't need to rely on anyone else. Now, show yourself, Roland! Put an end to me? Your body and mind. अरे यार. They can bear. It is only a matter of time before they yield and crumble. But if this is your final request. अरे फिर. क्या इरिटेटिंग है भाई ये. बहुत इरिटेटिंग था ये भी. Knight of Boreas. You're not quite how I imagined you. You don't seem half as crazed as the memories contained in the wolf spirit. Not once have I strayed from the righteous path. But when I look at you, I do not see a hero capable of slaying dragons. Just I guess we have that much in common. The Rayhir of Solmari's forces have been defeated. And the Roland you see, I wield the power that Roland did at his peak. Therefore, I, in my current form, am flawed. After redeeming you from injustice and guiding your surrender to the abyss, I shall rectify myself. The world out there can bear no more of your torment. Your obsession clearly remains Bloodstained Knight. as I had imagined. वो तो ठीक है बट ये इरिटेटिंग था सीक्वेंस जो उसको ढूंढ के इधर उधर करते रहो. Otherwise, why would you pin all your hopes on Boreas' single thought? But now the blade that once housed the wolf spirit has been You no longer have the means to change the situation, and no one will come to your rescue. This place shall be your graveyard, lonely warrior. Maybe you're partly right. But I think I might just have a shot at a rescue. What do you mean? There's only one person's mind I need to change, and it isn't yours. Forgetting where we are? This is the heart of Andreas. Andreas! Wake up! You are the great god of the North Wind! How long will you... If this is your final gambit, grand displays of heartfelt wishes cannot summon miracle. Return. Return to... Is this the answer that I found? Andreas, at long last, I have to... This is all that a wolf can hope to do for... On behalf of all humanity, I thank you. Boreas is returning to the ley lines. But why? Your sword is broken. You no longer have the means to bear his soul. Unless... Begging for miracles is a futile endeavor. I know better than that. But a sword is just one kind of vessel.
There are other ways to store a soul. The Dominator of Wolves once bestowed the power of his soul upon his pack, strengthening their hearts and I have only one shepherding piece their from that claws and artifact fangs. set from 6 years ago. It's only saving grace. It's 40 CV. Or else I would have forwarded it ages ago. मेरे पास एक भी नहीं होगा शायद देखना पड़ेगा. Even if it is not my intention, the soul of Lupus Boreas will inevitably ravage, devour, and assimilate a mortal heart. As if human and wolf were being forcefully merged into one. If a mortal heart is to bear the soul of a god, this is a path that cannot be retraced. Yet, I shall not dissuade a knight from embarking on the quest of his own choosing. Your heart, your soul, they are collapsing. You were wondering how a lamb could tame the heart of a... Here's my answer. You get the wolf to swallow the heart. The wolf spirit within the sword was merely a decoy. To avoid arousing my suspicion, you deliberately allowed Lupus Boreas' soul to assimilate your own, then be devoured by me. But how did you have the strength to fight while bearing such a Compared to Lupus Boreas' decision, You have a stubborn will, and employed an exceptional strategy. But this is not the way a true... Your soul is now merged with that of Andreas. When he fully joins, neither Barbados nor the Traveler will be able to anchor your soul from... You have lost, and so have I. Regrettably, I can no longer offer you salvation. May your soul rest in peace with Boreas. अबे इसने तो ब्लैक स्वॉर्ड भी पकड़ रखी है बैटल पास वाली. Sorry to disappoint you, but as much as it sounded like the perfect ending for both, the fact is that, unlike the true Roland of the past, I still have fine wine and good friends to get back to. They're looking. I'm not ready to accept my fate just yet. Ding dong. कट सीन आ गया. Until I return, I leave them in your care. The Knights of Favonius will always welcome you. Come on, to Mondstadt. Dear Grandmaster. To Varka. To Varka. Family. No pig call. अच्छा वो रेजर लिख रहा था. Poetry and letters were humanity's earliest means of expressing their thoughts. Make sure they all get delivered, Outlander who caught the wind. Grandmaster. Master. Varka. Varka. Uncle Varka! He's the right one! For Varka. The thoughts of others anchor you, reversing the assimilation. Using your connections, relying on outside help. This is not the way of a knight. The Abyss can sustain me no longer. But now, countless souls who died unjustly will emerge to prevent your return. If you believe in your path,
then grant them release. Carve your way out through bloodshed. Varka, mightiest knight of Boreas. This is how it ends. Throw the plan out of the window. Fight my way to victory. Well, that suits me just fine! Animation 100% damage. Byte is always true to their word. So please, keep your promise and return victorious. You are not alone. Right back at you, Varka. Boreas sweeping in! Thunder! The north wind blows southward. May it guide you on your journey home. एनिमेशन 100% डैमेज 1%। वही मैं भी मतलब एनिमेशन तो भाई साहब खतरनाक बना रखा। अरे ई करना था जी। अच्छा नोएल की शील्ड आ गई अपने पास, क्या बात है। There's an ice-cold drink with your name on it. Ready when you are. Don't go dying in a place like this, Varka. जैसे एलिमेंट्स मिक्स मैच कर रहा है ना उस वे में तो सेटिस्फाइंग लग रहा है खेलना, बट डैमेज नहीं होगा तो क्या फ़ायदा एलिमेंट्स मिक्स मैच करके। Fly home to us, Grandmaster! Spread your wings and soar toward a new dawn. Fate's chosen Lubaka. I can't fall here! थक गया है, स्लो हो गया इसके अटैक्स। अच्छा क्रायो लग गया था इसलिए। Walk forward and do not look back.
Varka. Now, I know the meaning of my name. After the lengths you've made everyone go for you, you'd better make sure to thank us all properly when you get back. You know, I have a lot of things to update you on, but they can wait until you're back. I have no intention of returning to the Knights of Favonius, but I trust you will find a way to manage on your own. Grandmaster, we're all waiting for you. Oh. I'm The Holy Grail. not doing too bad a job as Grandmaster, am I? I'll take Fire that weapons. silence as your approval. Everything you swore to protect with your lives, it's all still here, safe and sound. The Knights of Favonius, Mondstadt, and the oath sworn by every knight. I'll protect them all with my life. And so, After they protect I'll me. deliver that letter on your behalf. Didn't. Black Sword. उड़ जाएगा लेटर I know मुझे it's just a shadow of the real Roland, but if you have the time, could you please read it for him? Rostam and Arundelen, they never forgot you. Phew. This has been one long expedition. From here on out, I think I'll let the wind lead. स्टैचू के पास विंड राइस Hey everyone. It's been a mighty long time. I'm thrilled to... Welcome back, Grandmaster. Yeah. I'm home. ओ भाई खत्म हुई फाइनली लास्ट वाला पार्ट बहुत ही स्लो था बिल्डअप भी बहुत स्लो ही बनाया था यार इन्होंने It's been a while since I felt this wind on my face. My future. Huh. You may already have learned of this from Barbados or the Hexen Circle, but I glimpsed a reflection of the future in Barbara. Correct. Although, still, after I've typed... Besides, the first group... Ah, how noble! But, Bam! Wait! I'm only pulling your... it's been a while since I... Alright then. हो गया
इन्हें बॉस ड्रॉप स्विच करने का भी ऑप्शन दे देना चाहिए यार कुछ टाइम में. पता नहीं ये स्टोरी पे कुछ ऐसे थॉट्स निकल के आ नहीं रहे दिमाग में. Now it's your turn. Into the wind. Our bond is strong. Observe. Fear the dark. Be silent. A moonlit night for all. Out of my way! Stand with me. Close your eyes. Night falls. Observe. Surge. Dissipate. Wind strike. I'll be going out. Okay, thank you for the lurk, Monique. Brings a smile to my face. Mm-hmm. Time to go. ये भी खुल गया, क्या बात है. लग्जूरियस चेस्ट, नाइस. दो इधर. Brings a smile to my face. इतना ज्यादा भी मिलने लगे तो अजीब लगता है. Time to go. Our bond is strong. Lightning, Close your eyes. Night falls. One with nature. ओवरवर्ल्ड में तो यार एक ग्रुपर होना बढ़िया रहता है काजबा जैसा. Be silent. To dust. Close your eyes. Fear the dark.
दूर भाग जाएगा नहीं तो मुझे देख के। अच्छा नहीं, प्लेन को देख के दूर नहीं भाग रहा, कोलम्बिना को देख के खुश हो रहा है। Be silent. Night falls. Close your eyes to dust. A moonlit night for all. Wayne. Out of my way! Stand with me! मैं ऑरा फार्मिंग वाली बर्स्ट करना चाह रहा था बट वो मर ही गए। Our bond is strong. Every little bit counts. क्या हो रहा है यार, ये क्या दबाओ, इतना सारा टी से इंटरेक्शन रखा है इन्होंने इतनी क्लोज रेंज में। अरे Every little bit counts.
All right, this'll do. Exploration done, right? रेजोनेट हो गया स्टैचू। वेदर बदल गया भाई। स्टैचू रेजोनेट होने से वेदर बदल गया। और कैसे बदलेगा? मिला शायद मेरे को कुछ तो। The wind knows me. The long sleep beckons. Not to be sniffed at. भ्रमण करा रहे हैं, भ्रमण। क्या हुआ इसे? Goodness, how the world has changed. Might I ask, when did the custom of placing treasure chests in every nook and cranny come into fashion? Goodness, how the world has changed. Might I ask, भाई आई थिंक मैं आज में 4 से 5 लग्जूरियस चेस्ट तो खोल चुका हूँ। come into fashion? और इसकी वॉइस लाइन मुझे पसंद नहीं आ रही, टू बी ऑनेस्ट।
इश्क है यहाँ क्या है Perhaps these treasures might be of utility to you on your journey. One with nature. रुकी रे कटूरे कटे कटे ना मेरे बिना बसवानी रतियाँ सजना अगर ट्रेल पे ही आने वाले हैं तो कलेक्ट क्या करना है तो फिर ये करके ही दे देते हैं हमें ओ हमदम बिन तेरे क्या जीना ये क्या हुआ मैं तो प्लंज मारना चाह रहा था ये तो सीधे ही वहाँ ऐसे ही गिर गया बिन तेरे क्या जीना अच्छा मैं फालतू में जंप वंप किया यहाँ से डायरेक्टली ले सकता था मैं चेस्ट Be silent. Observe. To dust. Take too long. Every little bit counts. True. आजा चक्कर के मारे आजा और पुकारे तो पूछेगा कटूरे कटे ना सजना काटे अच्छा लड़ना है इनसे Be silent. Close your eyes. Clouds high. The birds call. Wind strike. A new moon rises. I'll settle this way. Observe. Be silent. Night falls. A fateful offering. Time to go. तेरे बिना जाने का सोना Surge. Wind strike. Bond is strong. Observe. Be silent. To dust. Observe. Do you fear the dark? Flame. Close your eyes. Do you fear the dark? Observe. Not to be sniffed at. कटूरे कटे कटे ना
Not to be sniffed at. Electra bhai, hello, welcome to the stream. Sorry. वार का क्वेस्ट हो गया? यस, फाइनली। बहुत इरिटेटिंग था लास्ट का पार्ट। इनिशियल बिल्डअप भी बहुत स्लो था, मज़ा नहीं आया ज़्यादा। बट एनिमेशन अच्छे थे बीच के। बट मतलब पूरा बेचने की कोशिश करी कि वार का ले ही लो। जब से आया है समा, मुझको खुद की भी खबर नहीं, खबर नहीं। ओहो शुक्र सपनों के मैं बालपुर, आंख जब खुली खबर नहीं, खबर नहीं। इस तरफ है आसमां, इस तरफ ज़मीं, खबर नहीं। मन मत वाला क्यों हुआ? दिस character got teased from 1.0 and for this quest। वही मैं बोल रहा हूँ, पता है मेरे हिसाब से जो वार का ले रहे हैं ना वो सब पुराने प्लेयर्स हैं जिनको डैमेज से फ़र्क नहीं पड़ता और उन्हें बस ये है कि भाई इतना पुराना कैरेक्टर अब आ गया प्लेबल तो अब लेंगे। क्योंकि मेरे को तो कुछ खास लगा नहीं, बिल्कुल भी लेने लायक नहीं लगा मेरे को ये। मतलब मिज़ुकी की तरह अगर स्टैंडर्ड में डाल देते एक बैनर देके तो भी आई थिंक मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। और मुझे नहीं लगता बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं इसको लेने में, पता नहीं क्यों। प्लस इन्होंने इतना ऐसा कर रखा है ना एनिमीज़ को कि नहीं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कैरेक्टर्स चाहिए तभी कर पाओगे। बट वारका के केस में क्या है, वारका के केस में ऐसा नहीं है। कोई भी ग्रुप पर उठा लो, कोई भी ढंग का रिएक्शन उठा लो, हो जाएगा सब। तेरा ही रहे आँख जो कहूँ, खबर नहीं, खबर नहीं। ओहो आसमां, इस तरफ ज़मीं, खबर नहीं, खबर नहीं। ओहो मन मत वाला क्यों हुआ? ऊपर ही है क्या भी? हाँ ऊपर ही है। इधर ही लिफ्ट चालू करना होगा शायद इसको। मेरे करीब है ऐसा क्यों है मगर ढूंढ बेकार। खबर नहीं हो इस तरफ ज़मीं, खबर नहीं समा, मुझको खुद की भी खबर। 50 डे वॉच स्ट्रिक हुआ करती थी, सब उड़ा दिया। हाँ यार एक दिन वो मैं स्ट्रीम कर रहा था बट नेट कट ऑफ हो गया था ना, तो फिर मैं वापस ही नहीं कर पाया स्ट्रीम। तो उस दिन खाली 15-20 मिनट की स्ट्रीम हो पाई। तो उसको अगर ये ट्विच काउंट कर रहा है तो उस वे में स्ट्रीक टूट गई काफ़ी लोगों की। बट एबिस देखा, एबिस किया क्या इलेक्ट्रा? अभी कल ही आया वैसे। तुम थे कल रात को? भाई कल रात को क्या ही मज़े मारे हमने, इतना थ्रो और इतना मस्ती टाइप। यस कर लिया एबिस, हो गया 36 स्टार हो गया क्या? क्योंकि अभी बिना लूनर के तो करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। कैसे कर लिया तुमने?
उसे ही ज़िबई है तो मेरे पास। अच्छा ज़िबई है। और ऊपर लूनर चार्ज में क्या किया? खत्म हो गई क्वेस्ट। ओए Who says there aren't benefits to a life of जीवन wonder? नहीं है। राही का जो काम है चलता ही। ओ भाई साहब मूवमेंट है भाई, मूवमेंट है भाई। गिरा नहीं मैं। वैसे तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं है करने को और, बट मैं गिरा नहीं भाई वहां से। कहाँ रख रखा है रेडिनेट स्पिन क्रिस्टल? Follow the wind. तो कॉलम्बिना भी ले ली क्या? नॉर्ड क्रैश से कौन कौन लिया? से अपना घर तू बना। Who says there aren't benefits to a life of wandering? राही का जो महल चलता ही जाए। सुन सैया में माविका ही लगाया। कॉलम्बिना ज़िबई, ज़िबई वेपन। बस अभी तक यही दो कैरेक्टर लिए और ज़िबई C0R1 या कॉन्स्टेलेशन भी लिए। क्योंकि तुम्हारा भी वर्टिकली इन्वेस्टेड अकाउंट है ना। Time to go. Everyone's morale. Nothing like good fresh bread to raise everyone's morale. कहानी से भी नहीं है मन मोहलिया जो राही का जो काम है चलता ही जाए। और क्या लेता मैं? वो तो तुम्हारे पे डिपेंड करता है क्या तुम्हें। Be silent. Fear the dark. The wind knows me. मैं बाहर नहीं खींच पा रहा हूँ।
brings a smile to my face. भाई अच्छा खासा मोरा और बुक्स हो जानी चाहिए अभी तक भाई, इतना एक्सप्लोर किया मैंने। नहीं यार ये तो पता नहीं मेरे को कैसे हुआ, मन्ने ना पता है भैया ये कैसे होगा। है जुदा दोनों का वास्ता दूर से। नहीं 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 ये नहीं करना मेरे को, मुझे नहीं करना वो चीज। Welcome. I'm not in Nod Cry at the moment. Oh yeah. Sorry. इधर कहीं ऊपर, हाँ वहाँ वो कैसे मिलेगा? ऊपर से ओपनिंग है क्या? ऊपर से ओपनिंग है नहीं है? देखें। है, मुझको भी है पता हो रहा है जुदा का। Time to go. Wait. A new moon rises. Get with me. Out of my way. To dust. Close your eyes. A moonlit night for all. Observe. Do you fear the dark? Na 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 na. Not to be sniffed at. रुत छा रही है, क्या नहीं है अपने पास? एक नहीं है। मेमोटा जेस्ट कॉन्ग
कॉन्गनो सेंटी। बाकियों का क्या नाम है? मेमोराटा हम्म द रेवेंस लेगेसी क्या है ये? पार्ट अच्छा ओके He who क्वेस्ट का wishes to peer into the abyss needs simply to wander through Notcry on a misty night. As one with wind and cloud. Close your eyes. Night falls. Be silent. Do you fear the dark? Into the wind. निकोल को लेना पड़ेगा शायद। शी सीम्स लाइक अ कैरेक्टर व्हिच कैन बी यूज्ड इन अ लॉट ऑफ टीम्स इन क्रायोनेशन। पायरो है वैसे वो, एलिमेंट तो उसका पायरो है, बट अभी निकोल पता नहीं कब है। अभी नेक्स्ट तो वो आ रही लिनेया करके, वो ज़िबई की सपोर्ट है, वो नहीं लोगे? या वो तो लेना है? ज़िबई का सपोर्ट है, लिनेया करके आ रही है। वहाँ तक कैसे पहुँचूँ मैं? आई थिंक वो क्वेस्ट के बाद जब मैं सारे ऑफर कर दूंगा तब वो पाथ बनाए, में भी वही लग रहा है मुझे तो। ये मेरा गेस है, लेकिन एलिस इज ऑल्सो पायरो। एलिस तो बहुत दूर है अभी। एलिस तो मेरे ख्याल से रफली या तो साल भर या 6 महीने तो हैं अभी एलिस को आने में। Brings a smile to my face. कितनी कौन सी क्वेस्ट बोली थी इन्होंने? रेवेंस लेगेसी मेरे क्वेस्ट मेन्यू में भी है वो। हाँ ये रेवेंस लेगेसी, इसके बाद ही मिल जाएगी। कोई नहीं, देखते हैं, सारा आज ही कर देंगे क्या? क्या हुआ इससे? Watch and learn. These old अच्छा ये लोकल लेजेंड है। गलती हो गई, गलती हो गई मौसी। दिल का चैन बिना ट्रिगर करे कैसे ही ये ऐसे ही पड़ा हुआ है बीच में? Who says there aren't benefits? To a life of wandering. कैसे होता कैसे Tap Q to secure the energy core in place. कुछ भी पता नहीं चल रहा,
Follow the wind. लगा ही था मुझे, क्या बैल बुद्धि है भाई यार। अब तो ठुक लेगा इसमें, ठुक जा। अच्छा वो उठाने का था ही नहीं। Time to go. बना तो दिया। फाइंड अ वे टू गेट द, अच्छा उसको लेके आना है। अच्छा आजा बे ओए, आजा। इसकी भैंस की आंख, मुझे भी गिरा दी। रुक क्यों गया? Brings a smile to my face. आधे से अधूरे से मिलते हैं हम, फीका लगे हैं। ये क्या है बे? ये वारका का बॉस है क्या? ओ ये तो मैं पहली बार देखा। अरे भाई साहब, Time to go. Get with me. ये क्या है यहाँ? Every little bit counts. बहुत जल्दी एक्सप्लोर हो रहा है बट एरिया यार। आधी है दुनिया में। ये लोनोक्यूलस वाला बहुत हेल्पफुल है भाई, बाकी कुछ हो ना हो। ये जो लोनोक्यूलस मिल जाते हैं ना इजीली। अरे भाई वहाँ कैसे? इससे क्या हो रहा है?
इधर का क्या मैकेनिज्म है ये? Fateful offering. What's lost has gone and why won't break interface is gone. Flee the sun. Ugh. भाई कितनी बड़ी पजल बना दी इन्होंने। कोई स्केलिंग भी है पजल की या बस मनमर्जी जितनी लंबी जितनी चौड़ी कैसे भी बना दो? पूरा प्रिज्म टाइप बनना है ये। पिरामिड यहाँ भी ले आए ये सुमेरु वाले, मानेंगे नहीं। Who says there aren't benefits to a life of wandering? भाई क्या हो रहा है ये? Brings a smile to my face. Fateful offering.
भाई क्या हो रहा है ये? ओ वाओ, पूरा एक ऐसे फोर्ट ही बना दी भाई इन लोगों ने। बताए मैनू क्यों, बताए मैनू क्यों, मोटी मोटी रुस के रुसा के। ये क्वेस्ट का पार्ट है। मैं ऐਵੇਂ ही पजल करते करते क्वेस्ट निपटा रहा हूँ भाई, क्या बात है। Time to go. Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade, it is the last link I have to the land of my birth. मैं अनजाने में पूरी क्वेस्ट खत्म कर दे रहा हूँ भाई, पजल करते करते। और नहीं खुलेगा ये, बस हो गया। और ऊपर वाली वो कैसे मिलेगी हमें, लुनोकुलस कहाँ है वो तो सबसे ऊपर था ना, वहाँ कैसे जाएंगे? चढ़वाएंगे अब ये इतनी बड़ी पजल करवा के? ग्लाइडिंग नहीं है। इधर टूटा हुआ है। One with nature. Time to go. Into the wind. The wind knows me. देखिए कभी पीछे पीछे आता है झक मार के। पाजुआ का पिक रेट एबिस में भले ही कम हो गया हो, स्टिजियन में भले ही कम हो गया हो, बट ओवरवर्ल्ड में तो यार कोई मेरे को तोड़ लगा नहीं इसका। ये फ्रैगमेंट से क्या उड़ रहे हैं, और अलाइन करना है क्या कुछ?
नहीं ये तो हो रखा है। फिर फ्रैगमेंट से क्यों दिखा रहा है वो? जैसे अलाइन होने को कुछ बचा है। Time to go. One with nature. Wait. Humans converge. I'll settle this. Dissipate. Wind strategy. Clouds high. The birds. Be silent. To dust. Goodness, how the world has changed. Might I ask, when did the custom of placing treasure chests in every nook and cranny come into fashion? Use of force authorized. Our bond is strong. Close your eyes. Night falls. Observe. Goodness. लाइक डैमेज वाइज मुझे पता है इसका ज़िबाई और इसका कोई कंपटीशन नहीं है, बट प्योरली सेटिस्फैक्शन लेवल ना फ्लिंस के ये प्लंज में ज़्यादा आता है कंपेयर टू जो ज़िबाई का वो है घोड़ा जो स्पॉन कर देती है वो। मतलब मेरी प्रेफरेंस तो ये प्लंज है ओवर वो घोड़ा। इनको मार चुका हूँ नहीं मार चुका हूँ याद नहीं आ रहा। Change of plan. Stand with me. Close your eyes. Observe. एओई वैसे इसका भी बुरा नहीं है फ्लिंस का, क्योंकि ये आगे पीछे दोनों ही मार देता है अगर एनिमी पीछे भी रह गया तो इसका वो एक रेडियस की तरह अटैक चलता है, तो आई थिंक एओई अच्छा है इसका भी। मतलब ऐसा नहीं है कि बेस्ट है बट अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिंगल वालों पे अच्छा है और बाकियों में बेकार। एओई ठीक है फ्लिंस का। मेरे नहीं बस में अब ये जिया मेरे। अरे एलिक्सर भी मिल गया है, क्या बात है। एलिमेंट्स क्या हैं इस बार? हाँ ठीक है। Now, even if we're at all right. More like we've gotten used to your आईटी इमेजिनेरियम थिएटर में एलिमेंट्स क्या हैं इस बार? हो गया, अब बस ये वो क्वेस्ट करना रहता है। ठीक है। आई थिंक स्टैंडर्ड में कोई 4 स्टार तो आना चाहिए अब, नहीं? हाँ भाई गारंटीड। सुक्रोस आई थी पिछली बार। कामिंग प्लीज कामिंग। रस्ट भाई सबसे घटिया वेपन, कोई नहीं यूज़ करता मेरे अकाउंट में इस वेपन को। आर्फ बहुत
रिफाइन हो गए भाई, रस्ट भी। R5 हो गया एक और। पहले से कितने? 1 2 2 R5 रस्ट। अबे यार, ओहो भाई साहब, ये वोल्ट की चाबियां मिल गई क्या हमें? देखें एक बार, चाबियां मिल गई हैं। ओह आओ देखें अभी आर्टिफैक्ट क्या मिलेंगे चाबियों से, मतलब वोल्ट से। अब ये ढूंढनी भी नहीं पड़ती, इन्होंने मैप पे खुद ही मार्क करके दे दिया कि जाओ इधर से खोल लो उसे। पहले तो ये ढूंढनी पड़ती थी नेट लाइन में जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी कि कहाँ पे है। मतलब नॉट सुपर हार्ड, बट ढूंढना तो पड़ता था आपको। क्या है लास्ट पीस? फ्लावर, बेकार सा। और ये आ गई डस्ट। नाइस। अब देखते हैं आर्टिफैक्ट क्या मिले। ये था लास्ट पीस। चॉकलेट डिफेंस EM क्रिकेट बैड, ये भी बैड, ये भी बैड, ये भी बैड, ये भी बैड। अटैक सैंड्स नहीं, अटैक सैंड्स विद नो डबल क्रिट, HP विद नो डबल क्रिट। बकवास बकवास बकवास, सब बकवास। इस वोल्ट से जो भी मिला सब बकवास। A moonlit night for all. Our bond is strong. Lightning? Fallen leaves, adorn my... Close your eyes. To dust. Observe. Alright, this'll do. इसी शौक का इम्तिहान जिंदगी। यही मार्क हो रखा है क्या? मोहरा कैश। कल जा रहे हैं तुम? Bring the two, run away. Maggot. Mandragore's back. इन्हीं को मैंडेगोर बोलते हैं। Brings a smile to my face. Time to go. Time to go. The wind knows me. सारे ही कर दूंगा क्या? 100% कर दूंगा क्या आज? Time to go.
वो किसी और तरीके से होगा शायद। Brings a smile to my... ए यार एक तो ये स्विच क्यों नहीं करते जब फाइट हो गई तो? Be silent. Not to be. One with nature. Observe. Night falls. Be silent. To dust. Out of my way! Stand with me! Beware the creatures of the night. Wind strike. Observe. Close your eyes. Do you fear the dark? Observe. Wait. This way! Every little bit counts. Time to go. Our bond is strong! Into the wind. As one with wind and cloud. Be silent. Observe. To dust. Close your eyes. To dust. यहाँ की सारी पजल्स हिडन क्वेस्ट या फिर क्वेस्ट के पार्ट से रिलेटेड है, तो पजल्स करते हुए अपने आप क्वेस्ट हो जा रही हैं। इसीलिए मुझे याद नहीं रहता कि मैंने वो क्वेस्ट कब करी। अब मैंने आज ही शायद 1-2 वर्ल्ड क्वेस्ट कर दी समहाउ।
जाने को जैसे कल Follow the wind. इधर से तो हम आए थे। वे गिर रहे हैं। मैं पजल करने निकला था और मैं क्वेस्ट में आ गया भाई, क्या बात है। Time to go. अबे भाई वो कब मिलेगा लुनोक्यूलस ऊपर? Follow the wind. Time to go.
Observe. Close your eyes. Do you fear the dark? Be silent. Surge. I'll settle this. The wind knows. Our bond is strong. The night cometh. Lightning terrified. Observe. To dust. Be silent. It's all yours. Stand with me. Wind strike. Fallen leaves. Adorn my... Observe. Night falls. Time to go. Who says there aren't benefits to a life? ऐसी वर्ल्ड क्वेश्चन हो तो करने की ज़रूरत ही क्या है, अपने आप ही हो रही हैं तो सारी. ये धुन कोई गाती थी, अब जो होता है वो पहले न होता था. Fateful offering. वो मुझे तेरा.
says there aren't benefits to a life of wandering? Time to go. Time to go. दिल क्या करे अपने में खोया रहता हूँ कहने कुछ कुछ कहता हूँ जाने कैसी ख्वाहिश करता भीड़ में तन्हा रहता हूँ जरूर क्या करें Time to go. A fateful offering. दूर तक हंस देता हूँ रोता रहता मेरी में कोई सावन सोता जरूर क्या करे
Brings a smile to my face. भाई ये फ्लिन लोकल स्पेशलिटी भी बता रहा है ना, तो इतने सारे मार्क आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ कहाँ जाऊँ। बटन पे आँखों में बातों में ले गया कोई, ले गया कोई सलामिश। Time to go. ले गया कोई सलामिश। वही तो फ्लिंस आएगा तो हाँ वो क्या बात है। चिकानी मस्त बस तुम ऐसे बुलाते जाते सारे तुम तो में फिर आगे जो मर्जी जो मर्जी रही हर दुश्वारी बस तुम तक बस तुम तक मेरी हाल सही नारी बस तुम तक मेरे इश्क तुम। Not to be sniffed at. चला हूँ न तक मिलूँगा दोनों तक मिलूँ दोनों तक
ओ भाई कहाँ पे है ये? किस कोनों कोनों में चेस्ट छोड़ा है मैं? जब मैं स्कैन मारा था तब क्यों नहीं बताया इन्होंने यार? नहीं इधर तो है ही नहीं, गलत जा रहा हूँ। हमें इधर जाना है। जब मैंने स्कैन किया तब क्यों नहीं बताया इसने यहाँ चेस्ट है यार? ये बहुत गलत चीज़ है इन लोगों की। मैं स्कैन करके आया था यहाँ पे, पता है? जब मैं यहाँ पे था मैंने पूरा स्कैन मारा था बार बार गैजेट के थ्रू, तब नहीं बताया इन्होंने, अब बता रहे हैं। ये भी इसी फ्लोर पे है? अच्छा ये क्या हुआ? ये गेट बंद हो गया। क्यों? Time to go. One with nature. कहाँ है? Time to go. Follow the wind. Brings a smile to my face. Oh.
द रेवेंस वाली तो नहीं खत्म कर दी ना मैंने? नहीं। Time to go. अरे यार फिर यही हो गया। The wind knows. Out of my way! सड़कों से झाड़ों फिर आ जाते हैं, इतने सारे सपने क्या कहूँ, किस तरह से तोड़े छोड़े क्यों ऐसा चले मुझे क्या उड़े ये क्यों। Thought sheep carrying Kawaki seeds core consists maintain a certain distance from others of their kind. This behavior suggests they
Maybe the result are caused by solar scoring. Okay. To test this, we have to regularly return stray slot sheep to this location. Stray slot sheep कहाँ से लाऊँ मैं? Be silent. Not to be sniffed at. एक और वोल्ट की सील्स मिल गई शायद. नहीं, क्या बोला था सील? ओ मेरे माये जिन्ना सोना ना कोई होना ना कोई होना जे मैं पिटल दे सोना. अरे कितनी बकवास चल रही इनकी यार. खत्म, मैं तो वो खत्म करने आया था कि हो गया बस, अब लास्ट लेवल हो खुल जाएगा इसका कंपास का, और एक्सप्लोरेशन भी सारी हो ही गई ऑलमोस्ट. ओ भाई थका दिए हैं, स्किप बटन दबाते दबाते. हो गया. ओ मेरे माये जिन्ना सोना ना कोई होना ना कोई खुदा. अबे कितने एलिक्सर हो गए? एलिक्सर ही एलिक्सर हो गए भाई. 16 एलिक्सर हो गए.
लुनोकुलस ज़्यादा रह रहे हैं यहाँ पे। चेस्ट तो कर ली ऑलमोस्ट। लुनोकुलस 1 2 3 4 5 6 लुनोकुलस रह रहे हैं इधर। इसके भी 10 ही लेवल होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। कॉलम भी ना भी चमकने लगेगी क्या? एक भी लेवल नहीं बढ़ा? अबे 41 दिए मैंने। हैं? हाँ वो भाई डरा दिए इन्होंने। ऐसा देश है मेरा, हाँ, ऐसा देश है मेरा। 11 पुल बना ली भाई आज में एक्सप्लोरेशन और क्वेस्ट करके, और अब टोटल आ गया 46। ओह नाइस। ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। इधर लेवल 2 ही है अभी। 80 पे हो जाएगा क्या अपग्रेड? 90 पे होगा। ओहो, तो यहाँ की कुछ वो निपटानी पड़ेंगी क्वेस्ट वगैरह। क्वेस्ट वर्क करना पड़ेगा मुझे लग रहा है इधर, और एक्सप्लोरेशन अनलॉक करने के लिए। अरे यार इसका एक क्वेस्ट था ना, कौन सा क्वेस्ट था? एक इवेंट एक्सप्लोरेशन में कौन सा क्वेस्ट है? अच्छा यही वाला है, ओके। रेजिन भी तो उड़ाना है, आर्टिफैक्ट ही कर लेते हैं भाई। The threads of your fate lie in my hands. When unions converge by royal decree. Animal. Observe to dust. फिल करनी चाहिए यार, वो चाहिए नाइट वाला। Absorption test. Animal test. Close your eyes to dust.
कुछ नहीं मिल रहा। Midnight Phantasm. Absorption test. Stand clear. Don't break my glasses. Night falls. डैमेज ER अटैक CR। अरे यार ये बट उसमें चाहिए था। कोई नहीं, मैं भी ऑफ पीस। The long sleep beckons. Observe. Night falls. अटैक डबल क्रिट हाई रोल्स है इसलिए रख लिया मैंने। अगर सपोज ट्रिपल अटैक काम करे कभी। रेयर ऑफ रेयर केसेस है बट इफ Close your eyes. Observe. चल भाई फ्लिंस अपने लिए निकाल एक आर्टिफैक्ट। अभी कचरा लेवल अप कर लेते हैं भाई, कोई भी घटिया सा पीस। जो सिंगल क्रिट रोल्स है ना उनको रोल करते हैं, अगर वो सही नहीं गए तो फेंक देंगे उन्हें सिंपल। जैसे एक खाली क्रिट डैमेज में जाना चाहिए। अगर ये 40-50 क्रिट डैमेज पहुंच जाता है, 50 तो नहीं वैसे जा सकता है, 4 लाइनर है, देखते हैं। अगर गया तो ही गया। मचल मचल के गा रहा है सुन नहीं सुन बदमाश धड़के हमारा बदमाश धड़के। ये जाएगा उसमें, क्या बोलते हैं उसे, एलिक्सर में। देखते हैं और कौन सा है। ऐसे इतना गंदा रोल हुआ है, एक भी क्रिट में नहीं गया रोल उसमें। तो अगर इसको रोल कर दूं तो $7.8 ओके। नो बोनस। एक और क्रिट। ओहो उसमें एक भी नहीं गया था, तो ये तो जस्टिफाइड ही है पीस। उफ जस्टिफाइड पीस है भाई, ये मिलना ही था। एलिक्सर में आ जाओ, वो 20 वाला डाल दो पहले तो। अगर भाई 40 CV इजी कितने से? इसमें जो एक अटैक रोल है वो इसमें इधर गया है क्रिट डैमेज में, और 40 CV, और ये कितने 9 9 18 18 32। हाँ
ठीक है, ये अच्छा तो यही है। ER भी अपना सही है, कोई दिक्कत नहीं है ER की हमें। एक एक रोल है इसमें। तो गॉबलेट तो हमारा हो गया, अब सर्कलेट भी हो गया, ये तो हो ही गया। अब बस फ्लावर और सैंड्स बेटर होगा, कब होगा वो देखना पड़ेगा। ये भी वैसे उतना बुरा नहीं है, बुरा है बट उतना बुरा नहीं, क्योंकि अटैक भी यूजेबल है, ER भी यूजेबल है। तो मेनली अपना सैंड्स ही ख़राब है जिसमें एक एक रोल ही है। बट ये 4 लाइनर है, बट इसको मैं तब करूं जब 3 रोल्स कम से कम जाए, क्योंकि अभी भी 2 ही जाएंगे और 2 तो गए हुए हैं, तो थोड़ा पॉइंट कम है इसको रीशेप करने का। ये जो मचल मचल के गा रहा है सन्नई से दिन, बदमाश दिन टटके हुए। क्या कीजिए दिल रह न दूँ, क्या कीजिए दिल कह रहा। Uncomfortable to walk on at night, but it gets so hot during the day. वो जो अधूरी सांसों की है। Rises. Oz, reveal absorption test. Be silent. Do you fear the dark? Night falls. क्या कीजिए, IT के एलिमेंट्स क्या हैं बे, मैंने देखा ही नहीं। हाइड्रो, क्रायो और एनिमो। देखिए कितने यूनिट्स हैं हमारे पास। लूनर मोड के लिए है नहीं है, बनाने पड़ेंगे क्या। है, लूनर के लिए भी है, क्रायो, इलेक्ट्रो और एनिमो ना। क्रायो, इलेक्ट्रो और एनिमो। कर भी आओ। जो दबी सी आंखें बंदी। जेट ब्लूम।
महाराष्ट्र क्या कीजिए क्या कीजिए दिल। अच्छा, सारे कैरेक्टर मेरे बिल्ड नहीं है इनमें से कोई भी। ओ, 6 में से 5 कैरेक्टर तो मेरे पास। अरे मोनिक्स भाई हेलो, वेलकम। हाइड्रेट म्यूटेड, हाँ किया था, हटा दिया। हाँ, मैं कैलकुलेट कर रहा था कितने पुल्स वगैरह बनेंगे। आईटी डन नहीं, मैं तो एलिमेंट्स वगैरह देखने आया था कि कौन से एलिमेंट्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स मेरे पास सफिशिएंट है।
तो अगर देखो अभी मेरे पास 46 पुल्स हो गए हैं, देखो 46 हो गए हैं, ठीक है। और आईटी से मिल जाएंगे 1000, और नए इवेंट जो आ गया 9 दिन वाला अभी जो आया है उससे रफली 10 पुल मान लेते हैं हम, तो 56 हो गया। 56 हो गया और 20 दिन में 10 पुल तो बन ही जाएंगे, तो 66 ले लें और फिर 15 की भी पिटी ले लो, तो मैं 80 तो पहुंच जाऊंगा। बट अगर फिर मेरे को लेनी है तो फिर ग्लिटर शायद स्पेंड करना पड़ेगा मेरे को, तो वो मैं नहीं करूँगा। देखेंगे या फिर क्या सिनेरियो बनेगा। आई हैव लाइक 34 कैरेक्टर्स फॉर दिस आईटी बट ओनली 1 पर्सनल डीपीएस। हाँ क्रायो, इसमें मेरे पास डीपीएस है वैसे मेरे पास इस बार। रेडिन भी है, फ्लिंस भी है, देखें एक बार ऑन फील्ड। राइजली, रेडिन, फ्लिंस 3 तो है मेरे पास, एक और ले लूँगा किसी को। सपोर्ट में भी 4 कैरेक्टर आ जाएंगे मेरे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ड्यूरिन भी आ जाएगा, सारे ही आ जाएंगे भाई, क्या बात है, तभी इतने ज़्यादा कैरेक्टर हैं अब इस बार। किसी का है तो न्यूवेलेट या स्कर कोई सी एक ले लेंगे, कोई एक ले लेंगे, या फिर एस्को फिर लेने का वेट करते हैं। अगर एस्को फिर आ जाएगी तो अपनी एक और पूरी क्रायो हाइड्रो एक और अच्छी टीम बच जाएगी। आई हैड टू क्लियर विद 1 डीपीएस। वो भी बाउंड है शीतलाली और उसके साथ फुरीना और हीलर के साथ। Also I did say bench C6 flins and use C2 चास्का। हाँ वो नाइट सोल वाले के लिए में भी अच्छा रहेगा वो चीज़, क्योंकि वो लूनर का जो सेकंड मोड है उसमें नाइट सोल बहुत ज़्यादा है। आई थिंक बट इलेक्ट्रो चार्ज विद क्या बोलते हैं, ओरोरॉन एंड न्यूवेलेट माइट वर्क। C6 flins would have bricked it. Where did न्यूवेलेट come from? नहीं, मैं तो वैसे पोटेंशियल टीम सोच रहा हूँ कि अगर उसमें हम मेन डीपीएस नाइट सोल वाला नहीं ले जाएं तो हम क्या क्या कर सकते हैं। नो हाइड्रो, क्या बात कर रहे हो? अच्छा न्यूवेलेट नहीं है, अच्छा क्रायो और इलेक्ट्रो है। ओ हाँ हाँ, क्रायो इलेक्ट्रो, हाँ माय बैड। अरे फुरीना देख के मेरे को लगा हाइड्रो है, वो गेस्ट में फुरीना आ रही थी ना। बहुत कुछ कर लिया बे आज। वारका की स्टोरी कर ली, नए एरिया को कितना एक्सप्लोर कर दिया, एक को 100 कर दिया, दूसरे को कितना कर दिया, इसको 78, इसको 92, बहुत एक्सप्लोरेशन कर लिया आज। क्वेस्ट भी निपटा दिए एक दो एक्सप्लोर करते करते ही। इफ दिस हैड हाइड्रो आई वुड 12 स्टार विदाउट ट्राइंग। हटाओगे कौन सा एलिमेंट? क्रायो। एनिमो ऑब्वियसली। हाँ वैसे वो तीनों एलिमेंट ऐसे दे देंगे तो फिर डिफ़िकल्टी क्या रहेगी। डेंड्रो नहीं आया ना? डेंड्रो कब आया था लास्ट? डेंड्रो कब आया था लास्ट? सिक्स 6.1 लोमा जब आई थी तब। अच्छा तुम लोगों को नहीं दिख रहा होगा ना, अब दिखेगा।
लॉमा के आने पे आया था पिछली 1 2 3 4 4 एलिमेंट से आया नहीं है भाई वो डेंड्रो। के आजकल ऊपर वाले को फुर्सत नहीं तुम्हें। हाइड्रो क्रायोजियो नेक्स्ट में आ रहा है। अच्छा लूना क्रिस्टलाइज और फ्रीज ओ लिनेया और एस्कोफिर और स्कर्क का आ रहा है 1 अप्रैल अप्रैल फूल्स। ओपनिंग कैरेक्टर राइजली दे दी इन्होंने, नाविया दे दी। ओके यूला दे दी। बाय द वे ये देखो ये पीस मैंने अभी रोल किया, अभी रोल किया मैंने ये ऑन स्ट्रीम। तो अब मेरा फ्लिंस का गॉबलेट भी सेट हो गया। बस अब सैंड्स और फ्लावर ठीक करना है थोड़ा सा, ये एक एक रोल जो है ना क्रिट्स के ये सही करना है। और ये चलो फिर भी ठीक है, बट ये ज़्यादा ख़राब है क्योंकि ये 4 लाइनर है और इसमें सब एचपी में चला गया है। तो इसको मैं रीशेप करूँगा जब या तो 4 हो या फिर 3 तो जाए कम से कम, तभी बेनिफिट होगा। गेस व्हाट, नॉट इवन 40 सीवी। कौन सा? ये फ्लिंस वाला जो है 1.4 और 18, हाँ 39.6 कुछ है ऐसे है। कोई नहीं, पहले से तो बेटर ही है। पहले ये फ्लैट अटैक और ईआर से तो बेटर ही है। फ्लैट अटैक भी है थोड़ा सा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मिन रोल थे यार ये 2.7 और 5.4 थे, वहाँ से अगर 39 तक जा सकता है तो। फोर लाइनर आईसी, हाँ वही तो। अब बस इसका सैंड्स ठीक करना है बस। सर्कलेट भी देखो काफ़ी तगड़ा है, अटैक क्रिट रेट यार काफ़ी सही है ये भी। गॉबलेट तो अब यही हो गया ऑलमोस्ट 40 सीवी, बस ये रह गया है, ये कुछ 26 सीवी है बस। इसको रीशेप करूँगा कभी, अगर मैं इसको यहाँ पे कुछ ख़तरनाक दे पाऊँ ना प्लूम में, तो फिर हम मे बी सैंड्स बदल पाएँ, बट कुछ है नहीं ऐसा। ज़िबाई से लेना पड़ेगा पीस, बट ज़िबाई को नहीं ख़राब करूँगा मैं। अगर फेदर अच्छा हो जाता ना तो मैं भी सैंड्स में कोई और दे सकता हूँ। ये भी दे सकता हूँ फ्लैट अटैक, ये भी दे सकता हूँ विद ईआर। ये नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा, ये वाला दे दूंगा विद ईआर थोड़ा सा 5 ईआर, ये दे दूंगा। देखते हैं क्या सही हो पाता है। लुक अप,
पहली ज़ुल्फ़े मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम। लिख दी मेरे हमदम। क्या चल रहा है भाई? कुछ नहीं, वारका की स्टोरी कर ली, एक्सप्लोरेशन हो गया आज के लिए तो हो गया मेरे ख्याल से। अब कुछ बचा नहीं है। प्लेन्स गूनिंग, चार्ज अटैक करना गूनिंग है। वाह, पता नहीं क्यों यार, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है यार, ये मेरे अकाउंट में आ गया है। पता नहीं वो रेजिन उड़ा लिया। हाँ अभी उड़ाया, थोड़ी देर पहले, 20-30 मिनट पहले। सोलो लेवलिंग देख लो फिर। वाह, इसका ई स्किल कितना मैटर करता है? मेरी हम और अच्छा लगेगा मतलब बहुत। बस लेवल 90 स्किल। जो रेफरेंस है ना इसकी लैंटर्न वाला इफेक्ट में, पागल हो जाएगा तू। मतलब ये है क्या, पूरा कैरेक्टर उसी से उठाया गया है क्या? मतलब वहां से कॉपी किया गया है? Majority so it should be bred as first. Level 90 is recommended. Okay, despite not affecting his direct, is still higher than leveling. His normal attack is more as his skill element multiplies applied to normal use during a skill state. Lens generates an electroparticle 2 seconds cooldown every time he hits an enemy with a normal attack during a skill state. He can generate up to 5 particles in each skill state. When they enter special, which gives him interruption resistance and he can then use special skill with fixed cooldown. While not providing much better damage than using 2 short bursts, however, with some extra energy from Flint's gear, rich enemy HP particles or his teammates, he can use his normal burst every 2 or 3 rotations for extra damage. Still, it's not something to normally count for. Arise, अरे लिंक देखना था, रुक जाओ। Two people, क्या? What teachers think if they let 2 people to the bathroom at the same time? Comment section. अरे यार कमेंट पढ़नी, यही सब रह गया कि शॉर्ट का भी कमेंट पढ़ना है। At C0 flank should be used with special skill burst twice per fill.
and as early as possible to benefit from short-lived buffs within 10 to 11 field time framework. This normal attack combo provides the highest motion value while also generating fiber. However, Flynn's normal attacks and compromise significantly part of his damage output. So, using different combos such as N5D spam can still yield similar results as long as proc 5 and simple. So, the last two normals of his final string will be out of physical state, but you should execute them to catch his fifth electroparticle. ये देखो भाई क्या ढूंढ ढूंढ के उल्टे सीधे इमोट भाई. EM भी preferred है क्या? Attack performs better than EM on Flames because he tends to get considerable amount of EM buff from teammates and himself, and scales best with crit and prefers crit ratio 1 to 2 crit damage after accounting 1 to 2. भाई मेरा तो अजीब ही चल रहा है. मेरा तो 1:2 का तो नहीं है मेरा रेशियो. मैं तो अलग ही उसमें हूँ. स्विच कब? किस में स्विच? अब तो मैं एंड करूँगा. अब नहीं स्विच कर रहा मैं. ये जेनरिक है, इग्नोर कर यार. बट अभी भी ना मतलब तो यार 0.3 क्रिट डैमेज नहीं मिल सकता है कहीं से. मिल जाता तो 280 हो जाता. फिर लगता कि हाँ भाई अब ठीक है. चैनिया है जहाँ भूमि में. बेखबर ओ बेकदर बेकाबियों को ना बड़ा देख ले. कैसा? अबे ये तो सेम ही है. हैं? एक मिनट. क्रिट रेट, क्रिट डैमेज, एचपी. अब मैं सेम को कंपेयर कर रहा हूँ. 0.8 क्रिट डैमेज, उसमें अटैक है भाई. और एचपी भी है. एचपी से वो स्केल करता है ना इसका वेपन का पैसिव. 50/280 watt. Crit rate low. Try to aim for 10 more CR. चेक बिल्ड इन आकाशा. क्या वेपन है? 5 स्टार वेपन है होमा, इसलिए ऐसा बिल्ड है. अच्छा, हूता वाला वेपन है ये. उसको मैं आंखों का काजल बना लूं. 2500 अटैक है भाई इसका. और अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, बस खड़ा हुआ हूँ इधर. पीजेएस के बेटर बट बेगर्स कांट बी चूजर्स. हाँ होना भी तो चाहिए. होता तो देता बट मेरा बिल्ड मुझे तो अभी अच्छा लग रहा है. थोड़ा सा क्रिट रेट के डैमेज में इधर से निकाल दूंगा. यहाँ से आ जाएगा थोड़ा सा, एक आध रोल और यहाँ से आ जाएगा. तो आई थिंक मेरा ठीक हो जाएगा बिल्ड. और अगर मैंने 4 वाला रोल करके सैंड्स में कर दिया बस, फिर तो 300 क्रिट डैमेज होपफुली, या 90 प्लस क्रिट रेट हो जाएगा. दोनों में से एक चीज़ होगी. इतने एब्रिवेशन कहाँ से आ जाते पीजेएस के? क्या है अब? प्राइमोर्डियल जेड विंग स्पीयर. वो फ्री टू प्ले वेपन नहीं है हरे वाला? वो ढूंढे तुझे तू बता. Enhanced Animal Module 75. Animo Test 6308.
का नशा तुझ पे चढ़ा। कितना मार रहा है ये अपने एक प्लंज में, देखें जरा आओ। I feel like I should get flames for premium skip Esco and then Linear. So this. अब बोलो तुम अपने अकाउंट को हमसे तो ज़्यादा ही जानते हो, तो तुम्हारी मर्जी। देखते हैं कितना मारेगा ये। इससे तो बेटर इसकी टीम होगी नहीं, मतलब जो मैं बना सकता हूँ। क्रिट नहीं लगा ना? क्रिट नहीं लगा, लेकिन इसने बड़ी बर्स्ट में 200 भाई 3.2 लाख मारा। हे राम, आ गई बर्स्ट। ठीक है, फिर से ट्राई करेंगे। बाय गेट आई मीन पुल टिल पिटी, मतलब 50-50 तक। तुमने वेपन बैनर पे मारे ना पुल, अभी वेपन पे नहीं मारते यार कभी भी। तू जैसे ओ भाई साहब 2.2 3.2 और खत्म, गायब बंदा। इज द बेस्ट वेपन बैनर फॉर 4 स्टार। क्या है ऐसा इसमें? अरे बट वेपन का क्या करोगे, कैरेक्टर तो चाहिए ना, मतलब पहले। सैक वो बेकार है, किसी पे नहीं इस्तेमाल होता। सैक्रिफिशियल फ्रैगमेंट्स में भी मुश्किल है ऐसे कैरेक्टर्स जिनको डबल ही करना पड़े, क्योंकि इतना फील्ड टाइम देना डीपीएस लॉस हो जाता है। फैवी स्वॉर्ड ही अच्छी है बस, और ये पोलाम अच्छा है बस, बाकी तीनों वेपन एवरेज हैं। 5 में से 3 वेपन एवरेज हैं, कहाँ से अच्छा बैनर है भाई। लास्ट 20 पुल्स में ये पोलाम ही मिला। भाई मत करो वेपन बैनर पे, करते क्यों हो पुल यार तुम लोग, बचाते क्यों नहीं? Observe to dust. Close your eyes. The long sleep beckons. Observe. देखते रेडन को 1 रोटेशन करेगा क्या? नेक्स्ट बैनर इज वर्स, यू डोंट हैव एनी आइडिया। अरे वेपन पुल ही क्यों करना है भाई, इतने इवेंट वेपन मिलते हैं, इतने F2P ऑप्शंस हैं, काहे वेपन पुल करना है? पता है जिबई का तुमने वेपन चलो ले लिया कोई बात नहीं, बट हार्बिंजर ऑफ डॉन बहुत पीछे नहीं है उस वेपन के, कंसिडरिंग अगर तुम अप टाइम रख पाओ उससे तो। यूला को दूंगा, क्या देगा यूला को? अच्छा वो आवारका वाली। अबे इसमें तो मेरे पास वो नहीं है। Your verdict is decided. Animal test 6308. Absorption. Be silent. Close your eyes. Night falls. Illusion. 5 लाख मारा, 2 लाख मारा, कितना मारा? Shattered. Midnight Phantasm. Animal test 63. Be silent. Close your eyes. To dust. अरे भाई कितना मार रहा है ये? एक मिनट भाई, मेरे को देखना पड़ेगा जाके कितना मार रहा है भाई ये। ऐसा क्यों लग रहा है बहुत मार रहा है, दिखाना है।
पहली रोटेशन से ही देख लेते हैं। आर यू रेज बेटिंग? फैब इज द बेस्ट थिंग। अरे भाई 5 में से 3 खराब हैं, समझ छोड़ो, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता। आई थिंक हमेशा 10 to 15 ही कम होता है सिग्नेचर वेपन से बेस्ट इन स्लॉट। वी बोथ नो यू आर गोइंग एंड कांट कीप अप टाइम इन स्टेजियन। मैंने अपना एबिस रन देखा था अभी, उसमें मैंने जब जब ई दबाया ना तब तब मेरा था। मेरी शिलोलिन बिल्ड है, वो एक ही हील में पूरा उसका बार भर देती है, पता है, 90% से ऊपर। मेरी शिलोलिन बहुत तगड़ी बिल्ड है हीलिंग के सेंस में। और अभी तो अल्ट मैंने उसकी बढ़ाई नहीं है, अगर मैं अल्ट बढ़ा दूंगा तो हो सकता है 40% से सीधे ही 90 के अबव कर देगी वो, अगर मैं अल्ट का लेवल बढ़ा दूंगा तो। अल्ट मेरी 6 पे है अभी, 4 लेवल रहते हैं अल्ट के, 4 या 3 जो भी है। I got like 10 of them. 10 RS5. Still can't 36 star. Stygian I said not abyss. Stygian में भी हो जाएगा भाई, अगर रोटेशन बैठ जाएगी ना और उसका बर्स्ट चालू हो जाएगा, क्या बोलते हैं, अगर शिलोनिन बर्स्ट चालू हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। शिलोनिन देखते कितना मार रहा है भाई ये। दिख ही नहीं रहे नंबर यार। तुम्हारी मदहोशी है, तू मेरा है अफसाना। 220 पहले पे मारा, दूसरे पे के, अरे नंबर तो 3। अरे भाई ये पढ़ने ही नहीं दे रहे, दिमाग खराब, पढ़ने ही नहीं दे रहे भाई। कितना मारा? 3-10 नहीं, वो तो दूसरा है। अबे यार, चलो नेक्स्ट रोटेशन में देखते हैं, रुक जाओ। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। 3 डैमेज विथ क्रिट, मतलब 20,000 लूनर चार्ज। सोहल लेंस आ गया अब। $60,000, 1,80,000 और दूसरा 273। अच्छा 273 और कितना था? 170। 185 मान लेते हैं, 190 मान लेते हैं। 190 60 250 250 और 273, मतलब 320 और 620 मार रहा है। दोनों प्लंज मिला के 620 मार रहा है, बाकी वो लोग मार रहे हैं जो मार रहे हैं। मेरी माविका बिना प्रीमियम के 1 शॉट में करती है तो हाँ, बट इसका तुम कंसिस्टेंटली निकाल सकते हो ना उतना डैमेज। माविका तो अलग है भाई, माविका तो वो तो बनी 1 शॉट के लिए, बट इसके तो 6 लाख के 2 चल जाएंगे उतनी देर में। बट तेरे अगर मेल्ट लग गए तो मैं आई थिंक, बट माविका को तो बाईपास कर देता होगा ये नेफा के साथ प्रीमियम में, नहीं C0 सब लोग। नॉट विथ कॉम्बो, हाँ कॉम्बो तो ब्रोकन है भाई, वो तो अलग ही चीज़ है। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम।
Hare Krishna. Ahem. 695 था कल ही. Lol every 10 seconds bro. 8 to be precise. With combos 230k plus DPS maintained 0. सीखना पड़ेगा फिर तो. अरे उसके कॉम्बो से उसका डैमेज बहुत बढ़ जाता है. आई थिंक 60 या 80%. मतलब अगर आप पूरा ही सीखेगा ना तो शायद डबल हो जाता है डैमेज, या 180 तक तो चला जाता है. लाइक अगर तू कॉम्बो नहीं कर रहा, नॉर्मल स्पिन करता है ना, तो उसमें अगर 100% मार रही, तो अगर तू कॉम्बो सीख लेगा तो आई थिंक 180 170 तक चला जाता है डैमेज. अगर तू आधा ही कॉम्बो सीखता है तो 150 140% डैमेज तू बढ़ा सकता है. मतलब आधा डैमेज रफली. अरे मैंने इसको वो चेंज किया था नहीं. और जबकि ये सूर्य ने बोला भी था कि चेंज कर लियो. रह गया. आंसर यू फिजिकली कांट प्रूव. अरे वो माउस पे बहुत आसान है वो उसको करना. माउस पे अगर एक बार समझ गया ना, तो जैसे मैं भी कभी कभी यूज़ करता हूँ, बट मैं कर लेता हूँ. ठीक से तो नहीं कर पाता, बट ओकेश कर लेता हूँ. Does 10% DPS increase. अच्छा मैं 10% वाला ही करता हूँ. फिर तो मैं नहीं करूँगा अगली बार से. अगर 10% ही बढ़ता है तो फिर क्या फ़ायदा. क्या हुआ, इमोट कहाँ है लॉल वाले इमोट. देखना पड़ेगा. ये तो रैडिश को समन करना पड़ेगा. तो धीरे से नीलों के धागे से बांधा ख्वाब को तेरे, मैं ना जहाँ चाहूँ आसमां चाहूँ. कॉम्बो शुड बी 30% बट योर टाइमिंग इज स्किल इशू. अच्छा उसमें टाइमिंग भी है क्या. उतना तो ध्यान देता ही नहीं मैं बस उसका वो घूमना सीख लेता हूँ बस. उतना नहीं ध्यान दिया मैंने उस पर. मेरे प्यारे बात बन जानी रंग शर्मतों का. I can do it. बहुत ज़्यादा तो नहीं मारेगा मेरा फ्लिंस, बट अच्छा डैमेज, मतलब सेटिस्फाइंग डैमेज तो मार लेगा मेरे ख्याल से. Hutao combo is harder than Mavi का combo. Hutao कौन सा, जंप कैंसल. Hutao कौन सा combo है. Fear the dark. Observe to dust. When a new moon rises. Midnight phantasma. Absorption test. Stand clear. Be silent. Observe to dust. A moonlit night for all. Oz revealed. Absorption test. Close your eyes. Observe to dust. To dust. Surge. थोड़ी थोड़ी सी बर्स्ट रह जाती है, उससे DPS गिरने लग जाता है. कॉलम्बिना की बर्स्ट कैसे नहीं आ रही. ऑलमोस्ट 1 लाख. कोई बात नहीं. N2 डैश
They should reach 140 on paper if it doesn't below average build. 140 कहाँ से पहुँचेगा भाई? 140 उसकी प्रीमियम में पहुँच सकता है, मतलब उससे ऊपर ही, बट 140 तो बहुत ज़्यादा हो गया बिना एनएफआ के। बिना एनएफआ के 140 तो मुश्किल। अगर ई स्किल से इतना फ़र्क पड़ जाए कि बहुत ज़्यादा ही डैमेज बढ़ जाए और ई में जो हिट्स पड़ रहे हैं वो कुछ ज़्यादा ही मारने लगें और वो 140 पहुंच जाए, वो मेरे को नहीं पता, बट आई डोंट थिंक बिना एनएफआ के 140 पहुंच रहा है। डेड इन इज शोकेस। अच्छा, लिंक है क्या उसका? नॉर्मल फ्लेंस वाले उसमें ही है गाइड में? नहीं, तब तक तो आया नहीं था ना मिलास्ट्रा, या आ गया था? Wait, I will timestamp. हो गए, गेम तो बंद कर सकते हैं अब। I win to lose gaming. Flins. I win. पवन का लग जाए झपका पवन का। रोटेशन, स्पेशल, टैलेंट प्रायोरिटी, टैलेंट प्रायोरिटी भी देखता हूँ एक बार, एक सेकेंड। थर्टीन परसेंट डैमेज इंक्रीज है। कर दूंगा, चलो ई स्किल भी बढ़ा लेंगे, मोरा ख़त्म हो जाएगा। इसकी गाइड में तो हो ही नहीं सकता, इस टाइम पे तो हेक्सेन सर्कल बफ आए नहीं थे शायद। इसकी गाइड में कैसे हो जाएगा? लेंस डीपीएस चेक, टोटली F2P फ्लेंस शोकेस। अरे ये तो कॉलम्बिना, इनेफा और सुक्रोस कितना जाता है अभी देखते हैं इसका। भाई 83 तो ये पहुंच रहा है इनेफा के साथ।
बस बावला है भाई, सही 60 पूरा तो कर ले। T0R1 66,290। अरे बाप रे, 10 क्रिट डैमेज ज्यादा और 16 क्रिट रेट ज्यादा, कैसे? बेंच फ्लिंस नहीं, बेंच फ्लिंस तो बिल्कुल नहीं होगा, अभी तो लिया है। दिमाग ठीक है क्या? बेंच कैसे कर दूंगा, अभी तो खेलना शुरू किया उससे। मोना भी खेल सकते हैं क्या? मोना से TTDS ले सकते हैं लास्ट स्लॉट में, बट सुक्रोज ज़्यादा अच्छा है। इज ए भाई बेटर देन फ्लिंस? हमें नहीं फ़र्क पड़ता, हमें बस फ्लिंस का दिखा दो डैमेज। फ्लिंस कॉलम्बिना इनेफा सुक्रोज, देखते हैं इसका कितना डैमेज आ रहा है। क्या करा है इसने? ओ भाई साहब, आई नहीं रही इसकी, बस मुश्किल से आई। भाई ये तो इतनी पूरा लेने के बाद 140 आ रहा है इसका, 140 160। आई थिंक एंडिंग 150 पे हो जाएगी मेरे ख्याल से, ऊपर ही होगी क्या? अरे बाप रे, 40 सेकंड्स का कैसे किया इसने टाइमर? 2 रोटेशन, 727 और 35। अरे भाई साहब, परफेक्ट पीस। ओ भाई 2:21 और 44 ओके। क्रिट डैमेज, अरे इतना तेज कहाँ जा रहे हो भैया? क्रिट डैमेज 11, क्रिट रेट 90 EM विद अटैक। हे राम, 90 EM भाई साहब। ए वेपन था क्या इसके पास? वेपन क्या है? मेरे से तो खराब ही है। हाँ अच्छा, R1 है। आर्टिफैक्ट क्वालिटी मेरी बेटर है, इसकी बेटर है? इसका 10 क्रिट रेट ज़्यादा है मेरे से, अटैक मेरा ज़्यादा है, EM शायद इसका ज़्यादा होगा, बट इसके पास वेपन है यार। आई नो ऑफिशियल सुग्रोस, चलो इसका देख लेते हैं क्या कितना आएगा। आयनो के साथ जा रहा है 80 के आसपास, 80-70 के। मेरा कितना आया था? 1 लाख, 1 लाख आया था ना रफली, हाँ। 80 के DPS। अब ये क्या करेगा? बिल्ड दिखा रहा है, प्रोस्पेक्टस F2P है भाई, कंप्लीट 4 स्टार वो यूज़ कर रहा है पोलाम। 8-8 यार, 8-8 कैसे कंपेयर करें अब? वार का भी ले लिया भाई ने, क्या बात है। TTDS VV 4 पीस C6 ओके। आई नो C6 है, आई नो C6 आई नो। कितना है? 80 ना? हाँ तो 15 कुछ डिफरेंस है। कोलम्बिना के साथ कितना है? अच्छा, अब इसने पूरी प्रीमियम टीम के साथ किया है। फ्लिन जिलेफा कोलम्बिना, क्या रोटेशन कर रहा है ये?
कॉलम इन आल्ट NF alt शिरोने मतलब सुक्रोस अल्ट अल्ट नहीं सॉरी ओहो 180 क्या बात है। ओके आई वाज रॉन्ग 180 मार रहा भाई, ये प्रीमियम में 180 मार रहा है। मुझे लग रहा है इनेफा वगैरह के बिल्ड्स काफ़ी तगड़े हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये तो देख लिया था हमने। इनेफा का क्या है सिस्टम? इनेफा पे भी वेपन है क्या? वेपन नहीं दिखा रहा। क्या क्या टू पीस है? टू पीस अटैक, टू पीस सीएम। अच्छा, अरे भाई साहब सारे वो क्रैक पीसेस दे रखे हैं इसको टू पीस के लिए। वेपन भी है, वाह सी, मतलब दो कैरेक्टर हो गए। नहीं, फ्लिन पे तो शायद वेपन नहीं था, या था? फ्लिन पे भी वेपन है, फ्लिन पे भी वेपन है, एनेफा पे भी वेपन है। और कोलम्बीना, कोलम्बीना पे भी वेपन है भाई। तीनों के सिग्नेचर वेपन लेके बैठा है तो 180 आएगा ही। F2P कहाँ से है भाई ये? इतने कैरेक्टर के वेपन भी हैं, कैरेक्टर भी है, वार का भी ले रखा है भाई। F2P कहाँ से है? ये नया अकाउंट है क्या? बिल्कुल ही नया तो नहीं लग रहा, कंसिडरिंग जितने आर्टिफैक्ट 20 दिख रहे हैं, नया तो नहीं लग रहा। स्टिल बट 180 के, इट वाज लाइक 120 समथिंग। I should not pull Flynn this fraud. Look at UID 7023. सुक्रोस TTDS था ना? C0R0 Flynn's Premium 200K DPS, 200K, 200K कहाँ से आ रहा है भाई? अरे भाई, होमा है तो, होमा के साथ कर रहा है तो। फोन पे है? नहीं, पीसी पे है। 2 लाख मार रहा है भाई प्रीमियम में, बट कैसे, इतना कैसे मार रहा है? Day 1 अकाउंट, या इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट R1 ऑफ अदर कैरेक्टर्स, है ना? मेरे को इसका देखना है, ये ऐसे कैसे 2 लाख पहुंचा दे रहा है डैमेज, वो भी R0 लिख रखा है। बट होमा भी काइंड ऑफ R1 है ही, होमा कोई खराब थोड़ी है। 5 स्टार तो 5 स्टार होता है। बिल्ड्स देखना है मेरे को। क्या 2 मिनट लड़ता रहेगा क्या? चल यार आगे, 2 मिनट मारे जा रहा है उसको, वो बेचारा निहत्था खड़ा हुआ है। बिल्ड नहीं दिखाएगा, हम बस मान लें। दिखा तेरी ऐसी तैसी, रुक चेक तो करके रहेंगे बेचे। होमा इज R.5 नंबर 1 फ्लिंस एंजॉयर होमा 66 290। बाप रे, 100 कर रखा है भाई, 100 कर रखा है फ्लिंस को। बारबरा पे टूम यूज किया हुआ है इसने। ये वेल है, मेरे को तो वेल लग रहा है। वेल या नहीं, वेल डॉल्फिन। C1R1 NFA। C1R1 NFA और फ्लिंस
C0R1 और कॉलम्बिना भी C0 है। चलो सिल्कन मून सेरेनेड और कौन था? सुक्रोस। हाँ ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है TTDS का बफ का जो कूल डाउन है ना, उतने में अगर मैं एक्स्ट्रा EM दे के अपना EM बढ़ा लूँ फ्लिंस पे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। कल ट्राई करूँगा उसको। शी इज़ डूइंग मोर डैमेज एंड फ्लिंस इन दिस टीम। चेक डैमेज डिस्ट्रीब्यूशन, वो कैसे कर सकता हूँ मैं? अच्छा उसके में आ रहा था ना वो डिटेल लेफ्ट में। टू लैक वाला यही है। हाँ ये रहा। इसमें ये डैमेज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आ रहा यार कि कौन कितना मार रहा है, वो नहीं आया इसमें। डैमेज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आ रहा इसमें। कैरेक्टर 1 कैरेक्टर 2 वाला ना, वो चीज़ नहीं आ रहा है। प्लेन्स लेस देन 50%। GC सिम में आया है एक भी प्लेन्स का? या सॉ इट, नो वरीज, आई सॉ इट। कहाँ कहाँ दिखा मेरे को बताओ। कहाँ कहाँ दिखा? कहाँ दिखता है? कहाँ दिख रहा है? अच्छा यहाँ दिख रहा है। ओ इसका लैग हो रहा है, मेरा लैग हो रहा है। लास्ट तक आते आते देखते हैं। 50% फ्लिन मार रहा है, 38% इनेफा मार रही है, 17% कोलम्बिना मार रही है और 2-3% सुक्रोस मार रही है टोटल डैमेज का। अब दिखा 50% डैमेज तो इसी का है। 48-33 ऐसे है। और अगर ये वेपन और C1 ना हो तो आई थिंक ये और कम हो जाएगा मेरे हिसाब से। कोलम्बिना का भी ER बढ़ाना है यार। एक क्राफ्ट कर लूँगा ER सैंड्स या तो डबल क्रिट। सिंपल रोटेशन है ये, नॉन कॉम्बो। और फ्लिन में कॉम्बो का क्या? अबे भाई ये तो 30-30 सेकंड में कर दे रहा है भाई। 30 एक वो 2 मिनट लगा हुआ था, ये 30 सेकंड में ही अपने आप को हटा लिया इसने। ओरोरॉन आयनो और ओरोरॉन आयनो सुक्रोस, ये क्या टीम है? हैं? बिना कोलम्बिना के इतना कैसे डैमेज आ रहा है भाई? Even in a fine grace lens damage, man, I do more DPS than this with combo. बिल्ड नहीं दिखाया इसने, या शुरुआत में दिखाए बिल्ड? बिल्ड कहाँ है? बिल्ड ही नहीं दिखाया इसने।
हाँ, C2 फ्लिन ले लो। C2 फ्लिन लेके डैमेज टेस्ट डाल दो यूट्यूब पे और फिर बोल दो हाँ देख लो भाई 120 के DPS आ रहा है फ्लिन्स। मतलब डालते ही क्यों है भाई, ये क्या दिमाग खराब क्या चल रहा है भाई ये। C2 और काइंड ऑफ R1 टाइप के वेपन लेके गजब भाई, गजब गजब, बहुत सही। रीड डिस्क्रिप्शन। C2 SOSS R1 फ्लिन्स। फ्लिन्स इज नॉट मेटा डिफाइनिंग। हाँ नहीं है, वो एनेबलर है भाई लूनर चार्ज, जहाँ करना पड़ जाएगा ना वहाँ जरा वहाँ अच्छे से काम कर देगा वो ऐप ब्रूट फोर्स नहीं कर पाएगा मेरे ख्याल से, बिना NFA के तो नहीं कर पाएगा, बट जहाँ लूनर चार्ज करना पड़ गया ना वहाँ पे वो अच्छे से कर देगा अपना काम, इतना तो है। वो कंफर्ट है, बस कंफर्ट है वो मेरे हिसाब से। जैसे लूनर चार्ज तो कॉलम्बिना भी एनेबल कर रही है रेडिन के साथ, बट कंसिस्टेंट लूनर चार्जेस नहीं है ना, तो वो बस कंफर्ट है कि आप ऐसा कैरेक्टर ले जा रहे हो रेडिन की जगह जो कंटिन्यूस अपना डैमेज लूनर में मारता है, तो उससे आप लूनर वाले चीज़ें कर सकते हो। लास्ट टाइम I saw Icarus Kirk with Esco was doing 80k DPS without lag and low ping. That got me more disappointed than Flynn's. वो फ़ोन पे है यार, और वो उतना सीरियस प्लेयर नहीं है, वो कैजुअली खेलता है मेरे हिसाब से। तो मैं भी कैजुअली खेलता हूँ भाई, अगर DPS और इन्हीं सब के लिए खेलना होता तो माविका मूवी का नहीं ले लेते, अभी भी फ्लिन लिया है। कैजुअल प्लेयर्स है भाई हम। Also, our combo is not doable on phone, so got 90k DPS. Was doing the damage testing, I am serious. AFK खेलता हूँ बोल देना था। एबिस करना है सोने से पहले आज। अगर रिएक्शन है तो हो जाएगा। चेक DM। ये आ गया होगा मोनिक्स की पावरस प्रोबस जो भी। मास्टर 33। इतनी तेज जा रहे हैं यार, ये मुझे दिख भी नहीं रहे क्या है ये। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है टू बी ऑनेस्ट, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अब थोड़ा बहुत दिखना भी शुरू हो गया। कुछ नहीं दिख रहा मेरे को। ना मुझे नोट दिख रहे हैं, ना मुझे ये तब समझ में आ रहा है कहाँ प्रेस हो रहा है और कब स्वाइप हो रहा है।
कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे इसमें तो। कुछ है भी नहीं इसमें समझने को, होना भी चाहिए ना कुछ समझने को, तब तो समझ आएगा। इतनी तेज तेज नोट जा रहे, पता नहीं क्या हो रहा है भाई। कैसे खेलते हो यार ये गेम? सोच रहा हूँ कर ही देता हूँ, फिर कभी इवेंट्स कंप्लीट कर दूंगा और बस हर दिन 5 मिनट जंक्शन। एबिस वैसे अभी आया है नया, तो टाइम तो है काफी, अगर तुम आज नहीं करना चाहो तो। आई हेट स्लो पार्ट, वॉच एट 0.5 स्पीड। उससे क्या फायदा, वो फिर गाने की रिदम और टेम्पो खराब हो जाएगा। नोट्स देख के गाने की बैंड थोड़ी बजानी। गाने का टेम्पो रिदम सब खराब हो जाएगा। जस्ट लास्ट 5 सेकेंड्स। फिर से देखूं लास्ट के 5 सेकेंड। अबे ये तो वो खुल गया। लो करूं इसको? अभी भी तेज है मेरे लिए, पता है। 0.40% पे कर, 0.4 पे कर दिया है मैंने, फिर भी तेज है मेरे लिए। आंखों से भी ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ मैं। डिफिकल्टी 12 हो गया। अरे बाप रे। ये इस डिफिकल्टी का क्या मतलब होता है? कि ये जो नोट्स आ रहे हैं वो कितने डिफिकल्ट हैं? डिड यू इवन नोटिस द डिफिकल्टी? हाँ मैंने देखा ना। 12 वाला नहीं देखा था, अब देखा 12 वाला, जब आएगा अभी। ये आ गया 12। दो 2-3 सेकंड के लिए आता है वो 12। That density is bullshit. Yeah, the pattern and speed anyways. So this is the yeah, I have to deal with. तो कोई गन गन पॉइंट पे थोड़ी तुम्हें बोल रहा है खेलने ये गेम। चलो आई थिंक एंड करते हैं, और तो कुछ रहा नहीं। इवेंट कर लिया, वारका का स्टोरी कर लिया भाई, पेली एक्सप्लोरेशन सब हो गया। अब कल मिलते हैं होपफुली टाइम से, 5:30 या 6 के अराउंड। आई थिंक 18th को मैं शायद स्ट्रीम ना कर पाऊँ, देखता हूँ 18th को मैं स्ट्रीम कर पाऊँगा या लेट करूँगा, अगर कर भी पाया तो। कल मिलता हूँ अब मैं। चलो भाई, गुड नाइट, बाय बाय। आईकरस को गुड लक, अगर वह बिस कर रहा है तो। चलो बाय बाय, गुड नाइट भाई, टेक केयर, सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय।